Hello, hello, and welcome to A for Arsenal. My name is Daksh. This channel is alive. I know, बहुत अजीब लगता है, but yes, we are still alive. I'm just little bit embroiled in some of my PhD से जो related काम है उसमें. But थोड़े दिन बाद will be regular again. But we have finally on this channel making his debut. The collab nobody asked for, but everyone is getting. Yep. I'm kidding. Hmm. Like there's few people who are like चौंकी को बुलाओ ना बारसा क्या सुनना है तो चौंकी को बुलाओ. So like okay, let's get Mr. Chonky, and we have with us bhai Mr. Chonky. Yes, already people are chonky. Hello Mr. Chonky, Mr. Ponky Chonky, how are you man? भाई डूइंग ग्रेट मिस्टर दक्ष, नाइस टू बी हियर। मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ कुछ, क्योंकि यूजुअली क्या है कि हम अब लाइक हम सेम बंदे आपस में रिपीट कर करके इट्स लाइक थोड़ा Hmm. थोड़ा हाइव, ऐसे हाइव माइंड सा हो गया। एवरीबॉडी स्पीकिंग द सेम थिंग। यू आर न्यू फेस, इट्स गुड टू हाँ. टॉक न्यू थिंग्स। और इनफैक्ट पता है क्या है, मेरे को एक चीज पसंद है, Hmm. और वो है कि मतलब एक इट्स लाइक कि मेरा ज्यादातर आपका रिव्यू, लाइक जो आपका परसेप्शन है ना, इट्स फ्रॉम Hmm. ट्विटर। Hmm. एंड आई लाइक द ट्विटर, तो वो यू आर थोड़ा ऑफ रिप देयर, यू आर यू थोड़ा अपना सो लाइक Yeah, yeah, यू डू योर थिंग, तो दैट्स गुड। तो आई एम yeah. एक्साइटेड। For me social media, like especially Twitter, is about just putting on a show as much as possible. And I honestly I think of my Twitter content, my Arsenal content is purely genuine. Now my Barca and Real content is getting a bit genuine, but I bhai mera to most of it is full meme man. um एग्जैक्टली। did he just say Yash face is ugly man? Of course he did. नहीं नहीं। Of course he did. uh but nice to have you here. But before we get into the football wala thing, Chonky, I've always been curious, and I don't think I've seen a podcast जहाँ पे you've addressed this. What is the origin of Chonky? चौंकी का ओरिजिन इज लाइक मिस्टर दक्ष, आपने सबसे बोझो सवाल पूछा है। मतलब मोस्टली लोगों को होता है कि इट्स अ यूनिक नेम, इट्स समथिंग डिफरेंट, Yeah. फुटबॉल कंटेंट और चौंकी नाम से। बट मेरा ओरिजिनल नेम था पोजिशनल प्ले पॉडकास्ट, द पोजिशनल Ooh. प्ले पॉडकास्ट। और उसपे मैं पॉडकास्ट वगैरह डालता था। फिर आई Hmm. स्विच टू डूइंग माय ओन थिंग। मैं ऐसे गेम प्लेस पे कमेंट्री करते हुए वीडियोस डाल रहा था। आई वाज डूइंग ऑल काइंड्स Hmm. ऑफ स्टफ। आई वाज Hmm. लाइक कि ये इट डजंट सूट इट कि पोजिशनल प्ले पॉडकास्ट। आई Hmm. वांटेड एक लाइक फ्यू सिलेबल्स, एक दो सिलेबल्स, छोटा सा Hmm. नाम जो याद रहे, एक बार में बोल सके। आई वेंट विद चोंकी क्योंकि इसके थंबनेल्स इजी थे। आई वुड जस्ट टाइप इन चोंकी एनिमल्स, और जो भी एनिमल आता था आई वुड जस्ट पुट इट इन द थंबनेल। थोड़ा Hmm. लेज आउट करते हुए काम। So that was the story behind it। और तब मैं मोटा भी था, तो पीपल जनरली थॉट लाइक कि चोंकी, That's तो आई solid, लाइक ठीक man. है चोंकी। Bring back Know Your Creator. Yeah, man, we'll do a KYC with Chonky. We'll bring back KYC as well, यार. KYC has been hiatus पे काफी लंबा चला गया. My plan was to do it last international break, but I went to India after a long time. So उस time तो नहीं हो पाया. So there is no meaning to it. No, man. It's just एग्जैक्टली। vibes. It's just vibes, just like Chonky's channel, man. And of course, his channel's name is tagged in the title. If you don't know Chonky, if you haven't checked him out, honestly one of the most unique personalities on the scene. I was telling him off screen also कि I am very intrigued by people जिनका एक बड़ा unique perspective होता है life पे. And it's not only his football content I'm a fan of. I also listen to his langurs and every other random podcast he does, chill streams, whatever. So I listen to him, man. uh, Yo Daksh bhai, Ponky kaisa hai? Yes man, everyone is asking, but Chonky kaisa hai now that it has been what, 2 days now since the announcement that हाँ, 2 दिन। Mr. Javier Hernandez is leaving your beloved Barcelona. How are you? Have you processed it? Are you okay with this? What are your feelings now? आई एम डेफिनिटली ओके विद दिस। मतलब मैं, अगर मैं ओके नहीं हूँगा तो इट विल बी लाइक सबसे बड़ी हिपोक्रेसी वाली चीज़ हो जाएगी कि Hmm. मैं ओके नहीं हूँ। बट ऑब्वियसली इट्स सैड। लाइक मैं कल से ट्राई कर रहा हूँ एक वीडियो पे काम करने का, तो एवर सिंस अब जब मैं वो वीडियो पिकअप कर रहा हूँ, Hmm. तो और ज़्यादा अपने इमोशंस को कुरेद रहे हो तुम। इट्स Hmm. लाइक इट्स लाइक कि वो जो स्टोरीज थी ना दिमाग में, इट्स द मैं बता नहीं सकता। लाइक क्योंकि शावी था, और इनफैक्ट आई वुडंट से कितना सोर हुआ है। आई Hmm. स्टिल हैड फन। मतलब फॉर मोस्ट बारसा फैंस आई थिंक, अगर तुम ये एंडिंग निकाल दो, Hmm. वी हैड फन भाई। लास्ट सीजन इट वाज अ राइड, वन ऑफ द Hmm. बेस्ट सीजन आई हैव एक्सपीरियंस रिसेंटली। लाइक Yeah. पिछले भाई आई डिडंट हैव दिस मच फन सिंस 2018-19 वाला सीजन, जिसमें मेसी वाज बॉलिंग।
तो Hmm. दिस वाज़ ग्रेट मेरे हिसाब से काफ़ी फन राइड। ऑफ कोर्स इट्स कमिंग टू एन एंड पर भी होता है ना, Hmm. मे बी इट्स नॉट अ गुड बाय बट अ सी यू लेटर। आई एम एक्सपेक्टिंग मे बी लाइक You really शावी think so? वो एक्सपीरियंस के साथ Hmm. पता है क्या है, मैं वन थिंग आई एम कन्विंस्ड फॉर शावी कि वो उसका जो थोड़ा एक तरीके से बिल्डअप रहा है सिंस कोचिंग जॉब लेना बारसा में, Hmm. क्योंकि स्टार्टेड वेरी डिफरेंटली जब डिपाय वगैरह टीम में थे, लाइक जो उसका फर्स्ट हाफ सीजन था कूमन की सैकिंग के बाद, Hmm. इट वाज अ वेरी डिफरेंट बार्सिलोना। Hmm. ही लॉस्ट सम गेम्स, he got some new players, and it was a different football altogether. Like Xavi Hmm. थोड़ा tweaked things, then he figured Hmm. out अच्छा this things works, और बस इसी पे टिक गया। Obviously अब ending में it hasn't worked out much, he needs more learning, more exploration, Hmm. but I'm convinced कि he's a good manager. I won't say कि like वो वाली चीज है भाई, बारसा can make good managers look bad. Hmm. You have to be super good, like great, almost all timer shit to look great here. Mhm. Varna it's very hard to look good here, especially after Messi. Things are Hmm. hard. तो भाई आई एम एक्सपेक्टिंग कि मे बी शावी विल बी लाइक आर, जैसे मैड्रिड में है ना कि उनके पास कोई मैनेजर नहीं तो जिडान लिया है, Yeah. 3 बार कर गया है, उस टाइप का Hmm. सीन। आई एम एक्सपेक्टिंग, आई डोंट नो, मैं थोड़ा गैस कर रहा हूँ मे बी, बट थोड़ी होप है। Hmm. It's been if we since Tito Villanova, there have been how many managers? There's been Tata Martino, there has been Kike Setien, Ernesto, Luis लुइस Enrique, एनरिके, right? कोमन, Koeman, and Xavi is शावी, the sixth one. Yeah, this has सर्गी been बारहुआन था बट नॉट रियली मैनेजर, 1-2 गेम्स के लिए। yeah. Now you've gone over six different managers now, each with different philosophies, each with different हम्म, visions for the club, each having a different status at the club, some of them being legends. ट्रू। Of course, who do you think, looking back now, who do you think resonated with your idea of Barcelona the most? दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर, क्योंकि मुझे याद है जो मेरा जब मेरे को इतना फुटबॉल नहीं पता था, आई रिमेम्बर द वो वाला गेम, सत्यन ने गेम खेला था वेयर ही लाइक डिड लाइक 1000 passes, Hmm. बार्सिलोना कंप्लीट लाइक 1000 passes, Hmm. 1-0 जीते थे, आई रिमेम्बर दैट गेम। और तब मैं आई वाज लाइक शिट, शिट, समथिंग्स कुकिंग, 1000 passes, दैट्स क्रेजी। तो मेरे को तब फीलिंग आई थी भाई सत्यन, हो भाई, मैं बट ऑब्वियसली सत्यन अगर रेट्रोस्पेक्टिवली देखो तो भाई Hmm. सबसे डिजास्ट्रस बंदा था Hmm. टेक्निकली, बट मैं कहूंगा सबसे ज्यादा जो मेरे को दिल के करीब था सिंस पेप, वो था भाई लुइस एनरिके। आई थिंक देयर इज नो अदर आंसर देन एनरिके, क्योंकि उसकी बारसा Hmm. वाज लाइक ही वन एज वेल, उसका लाइक उसका जो बिहेवियर सा है, लाइक उसने भी Hmm. सब सही नहीं था, एवरीथिंग वाजंट करेक्ट, Do, बट इट do वाज you फन, think इट वाज। do you think that was more down to his personal philosophy, or was it that MSN was also there at that point of time? Do you think that played a part in this? आई थिंक डेफिनेटली लाइक मेसी, सुआरेज, नेमार प्लेड अ पार्ट इन इट, बट आई थिंक वही Mhm. वाली बात है ना, लाइक सब चीजें साथ आ गई, अब आई कांट टेक इट अवे फ्रॉम एनरिके एज वेल, Mm. लाइक ही पुट इट Mm. टुगेदर इन द एंड, सो Mhm. आई विल Mhm. स्टिल गिव हिम क्रेडिट। पर अगर मैं Mhm. वैसे जेन्युइनली बताऊं, honest opinion, I think the best manager out of these lot is Valverde. Like pound for pound, the best Mm. manager is Valverde. Even better Mm. than Enrique. Current Okay. Enrique might be as good as Valverde. But वो जो Mhm. पुराने Enrique था, I'm for sure कि Valverde is better than 100%. that Enrique. All Yeah, right. for All sure. right. Karthik bhai, thank you so much for your chat message yaar. Sorry to the Bhajan panelists. Welcome Chonky to the channel. I was searching global waffles on YouTube. बहुत time हो गया यार. I know Karthik bhai. But yes, member for 11 months here. You're about to complete a year. Thank you so much Karthik bhai. You're absolutely a legend. W's Legend भाई, bhai. W's in the chart भाई. Karthik bhai. Karthik bhai is also on the Discord. He's super active. He's a managing mod for the Discord as well. So huge shout out to him as well. Dabu is also here. W collab too hot looking as. Thanks Dabu for the contribution here. I'll take some comments on that. Gaurav says Javi was the one which was most. Um, Ponky one we failed as a society. Coleman, to be honest, what do you think about Coleman's time? भाई मेरे को तो गाली पड़ती है, मतलब मैं क्योंकि कूमन लाइक पता है, Hmm. अब मैं हर चीज वो, क्योंकि मैं वो गेम खेलता हूँ कि अच्छा हर चीज का कंपैरिजन कर दो एंड इट गेट्स व्यूज, वो थोड़ा Hmm. वॉलेटाइल है, बट वैसे भाई कूमन आई थिंक अंडररेटेड है। लाइक उसके टाइम पे जो कंडीशन थी,
टीम की, क्लब की। Hmm. Hmm. भाई वी हैड Serginho Dest, Oscar Mingueza providing width Hmm. at this club. भाई इवन आर्सेनल हैजंट सीन डेज एज बैड एज दिस। मजाक नहीं कर रहा, लाइक क्वालिटेटिवली कह रहा हूँ। हाँ. इट इज लाइक वो जो पापस थोलू, जो भी, मैं आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट गाय, वो जो Who? सेंटर बैक है उसको तुम, क्या नाम है उसका, पापस थोलू, बहुत लंबा सा, Socrates उसको कैसे Papastopoulos. बोलूंगा। हाँ हाँ. सोक्राटिस, यस। Yes. वो बंदे से तुम फुल बैक शिफ्ट करा रहे हो, वो विड्थ दे रहा है, मतलब इट वाज Hmm. डिस्ग्रेसफुल। Hmm. बट ही मेड इट वर्क भाई, ही वन कोपा डेल रे। Mm-hmm. और पेड्री आया उसके अंदर, आई डोंट नो भाई, आई आई लाइक कुमन, मगर मेरे को पता है जस्ट लाइक शावी, मतलब जो शावी का लोग तारीफ कर रहे हैं, नॉट Hmm. टेकिंग इट अवे फ्रॉम शावी बाय द वे, क्योंकि Hmm. ही इज अ मैन ऑफ द क्लब, उसने लाइक सैलरी गिव अप कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा क्लब को। कुमन वाज द सेम गाय भाई, हैड नो इश्यूज विद द क्लब, कोई परेशानी नहीं। उस बेचारे को एयरप्लेन पे सैक किया लपोर्टा ने। Hmm. ही वाज गुड गाय भाई, आई डोंट नो, लाइक उसको हेट मिलता है बहुत, बट ही वाज अ गुड गाय। Okay. Okay. You know, Kavya is also here. Kaisa hai Kavya? Kavya says we should have never let Valverde go, and I want to like expand this question onto like, because like we can have like a very generic discussion about okay how you feel about Javi, who do you think is the next manager, and what is the next way forward. But since I find you very interesting, also want to make a I want also want to ask you like a very, मेरे को पूरी जो सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी मीडिया अराउंड बारसा है उस पे एक मेरे को मेटा कमेंट्री तुझसे सुननी थी इन द सेंस लाइक हम्म। this feeling जैसे like Kavya says we should not have let Valverde go. You feel that pound for pound he was the best manager, or somebody might feel the same for Enrique or Koeman or whatever. If you remember last season, even when you won the Liga, right, those हम्म। Javi terrorism memes were pretty common, right? What is this narrative building? What is this media obsession that even when things seemingly go well, like the trajectory is still upwards. I would say winning La Liga and Copa del you want the Super Cup, sorry, not the Copa del Rey. सुपर Winning La Liga and Super Copa. That is still in a first year campaign is a general positive trajectory. But this Javi terrorism memes or hounding Coleman out or hounding Valverde out or Enrique out. Why is this so? Do you think first of all this is unique to Barca? और ये बाकी हर बिग क्लब में होता है और do you, or why does it happen like this and then when people leave then they're like oh we should not have let this happen anyway. आई थिंक कुछ 3-4 जो सबसे लाइक जिनका इतना ग्लोबल फैन बेस है ना, उनमें होता है, जैसे लाइक यूनाइटेड में बुरी तरह होता है, बारसा Hmm. में भी बहुत बुरी तरह होता है, आई थिंक मड्रिड में भी बहुत बुरी तरह होता है। इट्स जस्ट कि वो ज्यादा स्टेबल है एज अ ऑर्गेनाइजेशन, तो इट डजंट लाइक I लुक honestly एज think बैड। Madrid has a very good control over the media narrative. I think एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, as soon as they feel that media is trying to drive the narrative here, they come out with a comunicado. Khatam. They एग्जैक्टली। have control दैट्स again. द बेस्ट पार्ट अबाउट भाई पेरिस, पेरिस का इतना कंट्रोल है ना। इनफैक्ट भाई Hmm. बायर्न भी, साले बायर्न ने आज वो टूखेल के लिए नहीं, उन्होंने भी Hmm, निकाले hmm, ऑफिशियल, hmm, hmm, hmm. जो सब फेक है ये सब वगैरह। तो भाई आई थिंक एक तो ये कुछ क्लब्स लाइक एक बार से इस मामले में वीक है, लाइक दे डोंट डू इट, स्पेशली विद जर्नलिस्ट। मैं ऑनेस्टली इतना बुरा नहीं समझता जब फैंस करते हैं, ऑल्दो फैंस कंट्रीब्यूट करते हैं वो टॉक्सिसिटी, वो नेगेटिविटी में, Hmm. बट मुझे लगता है वो इस कंट्रोल से बाहर है थोड़ा। Hmm. लाइक फैंस विल डू इट रिगार्डलेस, लाइक जो जिनको Hmm. करना है वो तो करेंगे। दूसरी चीज है कि बारसा के फैन बेस में स्पेशली इट्स थोड़ा डिफरेंट, कि सब या तो बहुत यंग बच्चे हैं, Hmm. क्योंकि एवरीबॉडी स्टार्टेड वाचिंग आफ्टर द गोल्डन जनरेशन वगैरह, इंक्लूडिंग मी। तो हमारा जो लाइक एक वो है ना, लाइक जो स्केल पे देखा है फुटबॉल, वो बहुत लिमिटेड Hmm. है। Hmm. वी हैव ओनली वॉच द बेस्ट ऑफ बारसा, हमने टेक्निकली बुरा टाइम देखा ही नहीं है जो इससे पहले था, तो फिर Hmm. हमारे लाइक वो स्केल्स बेकार है। Hmm. आई थिंक वो इट प्लेज अ पार्ट कि हम इस वजह से, मैं क्योंकि मैं भी देखता हूँ भाई, मैं बहुत, मैंने शावीबान वगैरह, तालिबान सब, आई हैव डिड ऑल दिस। मेरी ट्वीट, एक कोई लाइक इंस्टाग्राम पे ऐसे तालिबान का ऐसे पैरोडी हैंडल था, और Hmm. उस बंदे ने मेरी ट्वीट का स्क्रीनशॉट लेके लगा रखा था कि ये बंदा, तो आई हैव कंट्रीब्यूटेड माय फेयर शेयर इनटू दिस। पर मैं कहूंगा फिर भी Hmm. फिर भी मुझे लगता है इतना इतना फर्क पड़ना नहीं चाहिए यार ऑनेस्टली, अगर क्लब कोशिश करे ना, लाइक क्लब खुद से टाई डाउन करे चीजें, लाइक ना मैनेजर खुद आते हैं बाहर यहाँ पे, ना Hmm. क्लब का प्रेसिडेंट आता है बाहर, नोबडी कम्स आउट, सब बैठे रहते हैं अंदर, Yeah, because इस I तरीके see से। in the last 24 hours, I have seen your
Harvey Miguel, Sport, and especially those managing Exactly. Barca, FCB, Albices, they sub log. I've seen Arteta get linked. I've seen De Zerbi get linked. I've seen Tuchel get linked. I've seen Flick get linked. This person dreams of this. This person dreams of that. It's and I don't know why the Barca media is so strong. I can totally imagine because I see these fan pages for every club. ठीक है यूनाइटेड में हो हुँ। सकता बिकॉज यूनाइटेड में भी आई थिंक एक सिमिलर नैरेटिव्स है बट एट द स्केल ऑफ बार से बिल्कुल नहीं होता आई वांटेड एन इनसाइट की सो यू थिंक फैंस का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन है मतलब है बट इट्स प्रीटी मच इरेलीवेंट एज मच एज जितना मीडिया मेरे होता है और पता है क्यों? क्योंकि लाइक दिस इज़ अस जो हम ओवरसीज़ फैन्स हैं वो ऐसा कर रहे हैं। और हम्म मैं तो लाइक इनफैक्ट मैं कहूँगा बिफोर मैं माइनॉरिटी में था ऑल्दो थिंग्स वर नॉट गोइंग गुड पर लाइक मोस्ट पीपल वरंट ऑन दिस शावी आउट ट्रेन। मोस्ट पीपल वरंट कि भाई शावी गलत कर रहा है वगैरह लाइक शिखर की तरह थे मोस्ट पीपल I haven't लाइक कि heard it in any stadium, in any match going fan. एग्ज़ैक्टली एक भी एग्ज़ैक्टली कोई भी मैच गोइंग फैन नहीं बार्सिलोना में ही इज़ लव्ड एवरीथिंग्स गोइंग गुड। तो मतलब आई थिंक जो लोकल फैन्स है ना वो तो फिर भी इस बार लाइक शावी की साइड ही थे। Hmm. मुझको याद है वेलवर्दे के टाइम पे थे भाई देयर वर एक्चुअल वो कटआउट्स वेलवर्दे आउट वाले। Mm-hmm. Mm. Yeah. I remember, in fact, I would still say that media campaign against Javi is nothing compared to Coman. Also, Coman में तो हाँ, भाई मतलब they were trying to अलग ही like था भाई। portray him as like a mentally ill person, man. पता नहीं क्या था उस बंदे ट्रू का. फैक्ट्स। Xander, I'm assuming as Madrid fan because of Fede. Lucky 1-0 streak that Barcelona won the league last season has come to haunt them as karma this season. I don't see what the karma is, but it's definitely a contributing factor. We'll come back to Xander's question. Anushesh says, "Do you guys think Scaloni can be an option?" All right, we'll talk about what is the next step, and what Chonky thinks is the next step, and what I think is the next step. Actually, let's go into that only. Chonky, now the manager is gone. I mean, he is there till the end of the season. First of all, what are your expectations now from now till the end of the season? भाई विन 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 देयर इज ओनली वन एक्सपेक्टेशन भाई मैं द ओनली थिंग आई डू नॉट एक्सेप्टेड बारसा इज लाइक बोzo मेंटालिटी भाई विनर्स ओनली थिंक अबाउट विनिंग एक मैच हार गए यू ओनली मॉर्न फॉर अ डे लाइक Mm, शावी गया उसने यू मॉर्न फॉर अ डे भाई आज mm, लेवेंडोस्की ने डिनर अन कर रखा है दिस इज द mhm, वे यू मूव अप हो गया ठीक है खत्म गो बैक टू विनिंग मैं वो mm, रोना धोना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं वो नहीं भाई क्योंकि पता है कुछ ही प्लेयर्स है अगर गावी होता ना फिट आई एम mm, एक्सपेक्ट आई नो ही इज गोइंग आउट टू विन नेक्स्ट ईयर अब mhm, पता नहीं बाकी सबका स्क्वाड मोराल कैसा है हाउ आर दे थिंकिंग कैसा mhm, है बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि भाई नथिंग्स लॉस्ट कुछ भी ऐसा मत सोचो नेगेटिव नहीं आई डोंट वांट नेगेटिविटी गो आउट देयर एंड विन mm. So you think it's okay? What do you think is the reason he announced his leaving resignation in the middle of the season? भाई इनफैक्ट पता क्या है लोग मेरा नैरेटिव सुनते हैं Hmm. मेरे को लाइक अब आई डोंट नो राइटफुली कहो रॉन्गफुली कहो मेरे को लोग कहते हैं कि आई डिडंट Hmm. गिव शाबी इनफ क्रेडिट Hmm. अब मैं कह रहा हूँ अब जो लोग कह रहे हैं कि उसको सिर्फ वो प्रेशर में निकला है टॉक्सिसिटी में निकला है Hmm. दे आर नॉट गिविंग शाबी इनफ क्रेडिट Hmm. डू यू रियली थिंक शाबी डजंट नो कि अच्छा शिट्स गोइंग डाउनहिल इट्स नॉट Hmm. वर्किंग आउट व्हाट आई बीन ट्राइंग टू डू उसने 3-4 गेम प्लान स्कीम्स अलग-अलग ट्राई कर लिए उसने कांसेलो को इन्वर्ट करा दिया है उसने Hmm. दोनों फुल बैक्स वाइड खिला दिए ही हैज डन एवरीथिंग Mhm. इट हैजंट वर्कड आउट और वो Hmm. रियलाइज करता है उसके वर्ड्स भी इनफैक्ट ये थे कि वी नीड अ न्यू डायनामिक वी नीड अ न्यू कोर्स दैट्स द वे Hmm. और उसको पता है भाई आई नो ही नोज एग्जैक्टली आई डोंट नो अब हो सकता है ड्रेसिंग रूम वगैरह डायनामिक्स खराब होने लगता है व्हेन यू लूज तो वो भी होता है केस बट आई थिंक उसने परफेक्ट डिसीजन लिया ही नोज एग्जैक्टली व्हाट्स रॉन्ग ही नोज कि Hmm. मे बी somebody else can fix it भाई परफेक्ट डिसीजन भाई ही Hmm. स्मार्ट people don't give Hmm. him credit for it Mm. Yeah, no, that's true, man. I don't think Javi needs lessons from you or me or just in general Twitterati. He knows, yeah. The guy, there's a reason Barca hired him as a coach. He has a good, I guess, a team also as well. I also come to your comments जो तूने yesterday की stream पे मारे थे about fixing the backroom stuff as well. We'll talk about this. Hmm. Um, Before that, though, so if I look at Fabrizio's page, the pinned tweet is about Lucas Bergval. Okay, that's a Bergwijn 7 million plus 3 million. So that's a young one. He's, I think, what, 17-year 18 old, 17 if 18 I'm not yep wrong. Okay, Anthony. yep This came out when I was walking back home. Lons has for Mikel an 8 to 9 million package, but the club has rejected that. First of all,
you are signing 17. Do you agree with the way forward wala strategy that you are signing Bergwall? Okay, fine. You were linked with the couple of Argentinian wonder kids, midfielders, whatever. वो तो नहीं हुआ. Claudio went Hmm. to Man City. Man City. Uh, Moscardo went to PSG. But this general Yep. strategy of having, young kids, Vitor Roque, a 19-year-old, Lamine Yamal from your academy, a 16-year-old, Maguyu, 16, 17-year-old, Fort, Kubarsi, all these guys, super young, right? Under 19s, pretty much. You're playing with an Yep. under 19 squad with some senior and experienced people sprinkled in. Does Yep. that strategy make sense to you? Or is this just this guy making is it this just Javi making the best of what he has right now? Or do you think it's a I conscious think it strategy to like mold the club into a complete youngster wala squad जो एक साथ peak करेगा? I think for sure ये like planned strategy है like कि बहुत सारे यंग प्लेयर्स एक तो पहले तो like we cannot afford like lots of big signing. I think maybe like every 2 windows we'll spend big ones इस टाइप के like हमारे finances हैं और I don't expect कि अगले सीजन मेरा तो प्लान भी नहीं है like spend better on coach वगैरह ये सब. So I think ये strategy works. ऊपर से I think वो भी है ना कि like जैसे बर्ग वाला अब आई डोंट नो हाउ गुड ही इज लाइक मैंने कभी देखा नहीं है इतना उसे. Hmm. जितना मैंने थोड़ा बहुत देखा है इज लाइक मेरे को तो ये पसंद है ही 6 फुट 1 Hmm. जो लाइक एंगल बाइस वगैरह नहीं है ज्यादा तो ही लुक्स गुड बट वो है कि इवन इफ इट डजंट वर्क आउट तो साथ में लाइक यू विल मोस्ट लाइकली गेट अ प्रॉफिट ऑन Hmm. हिम. तो ये आई थिंक दिस स्ट्रेटजी वर्क्स भाई It's one एंड of वी those नीड टू सेल. buy to sell. आई थिंक इट लाइक बहुत सारी साइनिंग है बाय टू सेल है नोआ डार्विच मिखाइल फाय ऑल्दो मेरे को पसंद है आई थिंक ही माइट हैव अ चांस लाइक फर्स्ट टीम में. Hmm. लूकस बर्गवाल अब मैंने इतना देखा नहीं है तो डोंट टेक माय वर्ड फॉर इट बट ही माइट आल्सो बी वो वाला बंदा जो विल लाइक सेल फ्यूचर में. Eventually you will sell. So you get him for like what, 17, 20 million and you end up selling him for 40, 45 eventually. यप इस तरीके Mm, से यप दैट्स द mm, आई थिंक यही स्ट्रेटजी आई थिंक. और वो भी है कि लाइक आई थिंक जो आइडिया होना चाहिए ना लाइक इवन विद बिग साइनिंग्स mm, अंटिल यू नो फॉर श्योर कि ये इंप्रूव करेंगे mhm, डोंट मेक इट डोंट डू इट इट्स नॉट mm. वर्थ इट. Okay. Eugene, thanks for the 3000 won, yaar. Never got how coolers never acknowledged Javi for real. I think yeah, Eugene, he had them pretty split, to be honest. I've still see people who were like, okay, theek hai, matlab Javi should not go, should be okay. Some people think it was an inevitable thing that he's left. But no, thanks for the contribution. I don't think there's a lack of acknowledgement for Javi, no, from the fans. Like, भाई फॉर बिल्कुल भी नहीं भाई. mm, इनफैक्ट मुझे लगता है लोग ज्यादा ब्लाइंडेड है ऑनेस्टली लाइक वो mm, शावी का इमेज थोड़ा ब्लाइंड लाइक आई भाई मैं मजाक नहीं कर रहा इवन इफ वी हैडंट वन जैक शिट दिस ईयर ना बहुत mhm, सारे फैंस अब भी शावी के साइड ही होते. mm. Yeah, fair enough. Darwich, yeah, Noah Darwich also you guys got. Yeah. Fair enough. We'll take a couple of questions. What do you think about this? I think this was asked on your stream as well, and you said keep him for the academy. What's the और rationale? ये थोड़ा ये वो रैशनल तो ऐसा फुगाजी था ऑनेस्टली लाइक देयर इज नो वे यू कैन कीप अ लाइक वर्ल्ड कप विनिंग मैनेजर लाइक अकेडमी वगैरह इट्स At लाइक this point इट of डजंट time, at हैपन. this stage, yeah. हां सो Hmm. इम्पॉसिबल. He भाई has shown in, पता है थोड़ा yeah. गट्स चाहिए लाइक अगर स्कलोनी लाना है यू नीड टू हैव बॉल्स. स्कलोनी वो भूकंप आ रहा है क्या मिस्टर तक्ष आपकी नहीं साइड नहीं नहीं नहीं. बोल. Oh, that my डबलिन में आते नहीं क्या monitor भूकंप ज्यादा. started moving like that. Crazy. Anyways, huh? हाँ तो मैं कह रहा था कि यू नीड थोड़े बॉल्स लाइक उस पे बेट करने में क्योंकि उसका he is also not tested European stage पे और although Hmm. World Cup is the biggest stage but Hmm. national teams are a थोड़ा different ball game. I think a Hmm. lot of managers जैसे Deschamps does so well with national team but I'm 100% sure अगर उसे तुम कोई club side देखो he won't do as good. Hmm. तो I think वो थोड़ा risky है. It might work out might not work out but I think भाई अ, उसका एक positive for sure होगा he'll bring Hmm. something different at Barca which Hmm. is I think needed. Like क्योंकि उसका style of play वो Argentine. It has been भाई but it's been long since we've Hmm. had a like Tata Martino was the last South American manager. Hmm. Okay. Do you do you also, in addition to this, do you think a Spanish manager is the answer? A German coach is the answer? A non-European coach is the answer? Do you think that matters तो in terms of play style, मतलब culture, whatever?
ये तो आई थिंक थोड़ा रेसिस्ट, लाइक अगर बारसा को लूजर रहना है, ऐसे Hmm. रेसिस्ट एलिगेशन से फंसे रहना है, छोटी Hmm. क्लोजेटेड थिंकिंग कि अच्छा भाई यही यही वर्क करता है भाई, हमें तो स्पेनिश स्पीकिंग ब्लॉन्ड ब्लू आइड लेफ्ट हैंडेड जिसको लैक्टोस इंटॉलरेंट हो, इस टाइप का चाहिए, तो भाई इट डजंट मैटर वो स्पेनिश है, इट डजंट मैटर, Hmm. जस्ट गेट मी अ गाय हु इज कॉम्पिटेंट, लाइक हु विंस, दिस शुड बी द बॉटम लाइन। और पता है इनफैक्ट अगर लोग कहते हैं कि स्पेनिश मैनेजर, भाई अगर सिर्फ वही खेले ना गेम की, विच मैन Hmm. भाई स्पेनिश मैनेजर्स करंटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, Hmm. मिखेल आर्टेटा, पेप, क्या नाम है, एमरी, Hmm. शाबी अलोंसो, Hmm. अल्गुआसील, एर्नेस्टो वैल्वर्दे, सम ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ, सारी लीग्स में टॉप करे, लुइस एनरिके पीएसजी के साथ टॉप पे है, तो भाई सम ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड अभी करंटली स्पेनिश है, तो आई डोंट Hmm. थिंक ऐसे जर्मन लाओ, देयर इज समथिंग कि कुछ जर्मन मैनेजर अलग कुछ वो ला रहा है, भाई जिस मैनेजर को आइडेंटिटी कल्चरल शिफ्ट लाना होता है ना, दे डोंट डू इट बाय ऐसे कुछ, मोर और Hmm. लेस एवरी मैनेजर नोज कि फुटबॉल कैसे खिलाना है, Hmm. यू थिंक शावी डजंट नो कि अच्छा ये आर्टेटा क्या अलग कर रहा है, वो ही नोज, बट इट्स जस्ट कि उनके ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस they just don't come out that way. Some play coaches are able to train that into their teams, others Hmm. aren't, so get me a coach who can train players to be better, that's the bottom Hmm. line. Mhm. Lampard तो बिल्कुल भी नहीं भाई, Xavi और Lampard is basically the same thing. Hmm. Okay, let's take another question here. Is pe. Scaloni is done. Watch, he ruined Leva. I was so excited for him. Ruined his deep play, drop deep link, this link, that link for Ghazi. Okay. Do you Pichichi say a man who is getting assists Mm-hmm. of accidental touches? What do you think went wrong with him? But honestly it's very hard to say, but मैं Do you think he just age just caught up with him, or is it a I don't conf? think so age, I I think don't एक तो buy एक this issue एक that it's a confidence issue for him. The guy is a seasoned pro, यार. He's been doing this since the age of 19. 13 exactly, साल में आई डोंट थिंक यू सडनली डेवलप अ कॉन्फिडेंस इशू कि भाई मुझे तो शूट करना ही नहीं आता है। ना 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 वो तो फॉर श्योर नहीं, आई थिंक एक केस तो फॉर श्योर ये है कि लाइक टीम डायनेमिक्स इतने बेकार है कि एवरी प्लेयर, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट लेवेंडोस्की एज वेल, वो सबसे बड़ा नाम है तो वो ज्यादा दिखता है, लेकिन हुँ, सभी बेकार है, और ऊपर से भाई इफ आई हैव टू बी कॉन्स्पिरेटोरियल, हुँ। तो मे बी लाइक अगर कुछ बंदे हैं ड्रेसिंग रूम में हु आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ शावी, दैट लाइक मे बी लेवेंडोस्की इज वन ऑफ देम, मे बी, अभी तो आई आया डोंट था नो। कि ही हिम एंड कैंसेलो वर क्राइंग। हाँ अरे मतलब मे बी ऐसे कि अच्छा, आई डोंट नो भाई, वो अब अगेन अब उसमें डिनर पार्टी थ्रो कर रहा है, शावी जा रहा है सिर्फ प्लेयर्स की, व्हाई इज ही डूइंग दिस, थोड़ा सस Honestly, भाई, आई डोंट नो। yeah, it is a bit sus. Hmm. You said something about improving the backroom staff of FC Barca. I mean, it's not just the coach you have to improve, but in terms of, um, I think that was you, right? Or am I mixing it with यप, Muktesh? नहीं You, नहीं it वही था वही था। Huh. And it's not about just the coach, but the coaches around him, the medical staff. But also, यप। I want to talk to you about the talent ID, the scouting, the influence of हुँ, one of the biggest agents at FC Barca. Right? I'm gonna run you through some recent acquire, जो भी acquire किया है Barca ने. Acquires, selling, whatever. You've only sold them because you've bought them. I want you to just give me like a general lowdown of, let's say, okay, are you? It's been too early for Vitter. Okay, he's 18 years old, 40 million. Do you think हुँ, it's a good investment to make? आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, Hmm. Okay. Oriol Romeo. आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, Okay. 3 मिलियन भाई मैं अगेन भाई बारसा फैंस रोएंगे भाई, 3 मिलियन में वेयर आर यू फाइंडिंग अ बेटर 6, Hmm. 3 million पे तो यार वाज it's. द ही वाज गिरोना का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर लास्ट सीजन, Hmm. गिरोना Hmm. इज टॉप ऑफ द टेबल राइट नाउ, ही इफ अगर वो आप आज ट्रांसफर होता है ना उसका गिरोना के बाद, ही स्टार्टिंग फॉर गिरोना, तो आई डोंट मतलब अब वो बेकार रहे हमारे लिए, आई एम नॉट डिनाइंग दिस, ही हैज बीन बैड हियर, पर Hmm. अगर बिफोर यू न्यू कि अच्छा सीजन ऐसे प्ले आउट होया, आई थिंक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। Hmm. Huh. I mean, investment not in terms of how much you're going to recuperate, but from the amount of money you had and for the services he can provide. I guess that's okay. Gundogan, I think unanimously has been a good signing. Inigo Martinez for गुड free. साइनिंग, Yeah. यप,
These two I am very conflicted about, Cancelo and Felix. भाई मतलब मैं तो लाइक मैं हमेशा से इनके फेवर में तो नहीं था ऑनेस्टली। कांसेलो Mm, फिर भी मेक सेंस क्योंकि राइट बैक, वो मिडफील्ड भी खेल सकता है, लेफ्ट बैक भी खेल सकता है, लाइक अच्छा mm, प्लेयर भी है। mm. बट कम ऑन मैन, डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड अबाउट जो फिनिश। Jovinus. What भाई do you उस think? बंदे भाई Why was he bought? Is it just like a personal project for the president, or do you think there was a solid rationale? It just did not work out. आई थिंक पर्सनल प्रोजेक्ट है फॉर श्योर विद मेंडेस, विद Mm, लपोर्टा। लपोर्टा बहुत पहले से कह रहा है कि जोआ फिलिक्स इज समवन लाइक he'll get जोआ फिलिक्स लाइक एम्बापे mm, वगैरह। वो उस टाइम भाई उसका हमेशा से रहा है वो, लाइक कोई इट्स छुपाने वाली बात ही नहीं ऑनेस्टली कि जोआ फिलिक्स mm, ऐसे पर्सनल वो है। तो फॉर श्योर mm. भाई आई एम हैप्पी कि वो उसका जो वो था ना लाइक हनीमून पीरियड वो निकल गया। तो देयर इज नथिंग टू हाइड बिहाइंड, इसलिए हमने साइन कर लिया। आई डोंट थिंक विल साइन हिम ब्रो। I it's like a very common trajectory in pretty much entire career, man. When you even moved to Chelsea, also phenomenal in the first game, but then kept on steadily falling off. I don't know why. How Griezmann, I think, matlab, was an interesting signing. At the time, I would say it made sense, but it just भाई felt उस टाइम like पे मेरे को भी लग रहा था बैंग कर जाएगा, बट वो फिट हो ही नहीं पाया। hmm, Trincao. I don't think he featured too much. Is Abde sold or on loan? ही सोल्ड। He's sold. What do you make of that selling? Do you think you could have used him instead of Felix? ए इज एक सेकंड, आप दिस, आई थिंक आप दिस सोल्ड राइट। I आई think माइट बी Abde is रॉन्ग। sold. Transfer market says loan, but I think it's probably like a loan to buy kind of thing. I don't know. हाँ, आई थिंक या Hmm. भाई आप दिस ग्रेट भाई, आई थिंक इज अ गुड प्लेयर। Hmm. पर आई थिंक you get the best amount of money you can get out of him. Hmm. And so there's Longley, there's Dest, there's Nico Gonzalez, Umtiti, Calado. I mean, sure, but in terms of your in the players you have had in the last few years, 2023 onwards, June 2023, an average sum of 43 million, an average age of 24, and it's almost 272 million. Thi. From the departures, I think you've done well. Yeah, I think he's gone. 7.5 million pay you've sold him. वही Yeah. So, looking at the buying you've done in the last year, do you think the talent ID is where it should be? In terms of like, हमारे पास limited पैसा है, we've bought the right players. We bought the players that we could have bought for this sort of money. Or do you like एक मैं चैट को एक चीज बोल देता हूँ, देखो, I understand for a fact that if you have seen Barca in the heyday, आपका तो होगा expectation कि यार हम खुश हो रहे कि हमने ओरियल रोमेओ ले लिया, but context always matters, right? Like if you are always going एग्जैक्टली। to be super nostalgic about भाई, मतलब हम तो लेते थे the best in the world, हमें चाहिए होता था थियरी ऑनरी तो थियरी ऑनरी आ जाता था बारसा, ठीक है, हमें चाहिए होता था सुआरेज तो सुआरेज लिवरपूल को छोड़ के he would join Barcelona, but this is not it, right? um एग्जैक्ट this is not the context of what you guys have, because every week, and I'm not even joking, Chonky. Every week, the issue at Barca changes. When Javi was हाँ, in the job, too many kids, the old यप, people are useless, the president एग्जैक्टली, is crap, the agent has too much, the play style is bad, the play style is good, but the players are crap. It's like you can't narrow down कि इसमें actually हो क्या रहा है. And so this is why I'm यप। asking you about the talent ID in context of what you have right now and what you can achieve right now. Do you think this is a good 1 year of talent ID? Uske baad Bergwall and your whatever young kids you're buying. इट्स पता है, मैं डेफिनेटली पॉजिटिव साइड पे रखूंगा। आई वोंट से इट्स सुपर बैड, Hmm. लाइक कंटेक्स्ट के हिसाब से। Hmm. पर देयर इज अ केस टू बी मेड कि इट्स नॉट, स्टिल नॉट वेयर इट शुड बी। तो जैसे एग्जांपल दूं, लाइक कुंडे, ऑल्दो ही इज नॉट अ बैड साइनिंग बाय एनी मींस, और Hmm. इनफैक्ट शायद बेटर टीम्स लाइक, क्योंकि लास्ट सीजन वी वर सो गुड कि ही वाजंट इवन अ इशू कि Hmm. कुंडे इज अ इशू वगैरह। Hmm. पर मैं वैसे कह रहा हूँ लाइक कि हमने इतना, इट स्टिल फील्स लाइक कि ड्यू डिलिजेंस नहीं उतनी, लाइक कि सिर्फ कुंडे ही क्यों ऑप्शन था व्हेन वी कैन प्रॉब्ली गेट कोई लेफ्ट सेंटर बैक जो हमें चाहिए भी इनफैक्ट चीपर लीग वन से। Hmm.
विद जस्ट एज मच गुड, लाइक उतना ही प्रोजेक्शन, वही सारी क्वालिटीज देगा जो कुंडे देता है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं लाइक देयर इज लिटिल बिट ऑफ, कुंडे इज नॉट अ बैड साइनिंग, रफीना राइट। इज नॉट अ बैड साइनिंग, फेरन टोरेस इज नॉट अ बैड साइनिंग। हुँ, पर ये सारी साइनिंग्स में थोड़ी ड्यू डिलिजेंस मिसिंग है। इनफैक्ट पता है, मैं रफीना को इसमें रखूंगा भी नहीं। व्हेन रफीना वाज अवेलेबल आई थिंक ही इज द बेस्ट ऑप्शन। उस टाइम पे उससे बेटर राइट विंग था ही नहीं कोई। आई डोंट थिंक देयर वाज एनी अवेलेबल राइट विंगर जो था, लीड्स जो थे उसकी एंड क्वालिटीज एवरीवन वाज़ देता है। आफ्टर हिम, चेल्सी वर आफ्टर हिम, वी वर एग्जैक्टली, आफ्टर हिम। चेल्सी, एग्जैक्टली एवरीबॉडी वाज आफ्टर हिम। तो आई डोंट थिंक सो वो इतना ऐसा कुछ बेकार साइनिंग वगैरह है। और इनफैक्ट ही हैज बीन गुड एज वेल, लाइक अगर प्रोडक्टिविटी के मामले से हो, क्योंकि वो हमेशा गोल्स असिस्ट उसने दिया है बारसा में। तो आई हुँ, थिंक बहुत थोड़ा मिक्स सा केस है। और अगर बेकार प्लानिंग की बात करोगे ना, तो आई थिंक वो वहां पे रही है कि जैसे कि अगर तुम्हें पता था कि जैसे बुस्केट्स जाने वाला है नेक्स्ट सीजन, तो व्हाई डिड यू वेट सो मच फॉर दिस? हुँ, कि ओके, मतलब उसकी तैयारी पहले से होनी चाहिए थी। हुँ, somebody else could have waited, मे बी फेरन हुँ, टोरेस could have waited, समझ, कुछ ऐसे मिक्स अप कर सकते थे, समथिंग could have been different। हुँ, बट देन अगेन भाई, और ऊपर से आई थिंक इट्स नॉट अबाउट टैलेंट आईडी, इट्स अबाउट मोर अबाउट लाइक प्लानिंग, की चाहते क्या हो गई टीम से, हुँ, व्हाट डू यू लाइक, हाउ डू यू वांट टू बिल्ड द टीम। हुँ, अब क्योंकि हम वी आर फोर्स टू प्ले फ्रेंकी, गुंडो, पेड्री, और अगर गावी होता है तो गावी वगैरह ये सब, वी हैव नो नंबर 6, इनको ओवरवर्क करना पड़ रहा है, बाल्दे ओवरवर्कड, हमारे शी जो इज़ भी एक इंजर्ड ढंग नाउ, डिसेंट। गावी इज़ इंजर्ड, एग्जैक्टली। अब पेड्री कीप्स अब गेटिंग रफीन इंजर्ड। इंजर्ड है तो लमीन, लमीन को ओवरवर्क करना ही पड़ेगा आई थिंक, और कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास। तो वो थोड़ा लाइक स्क्वाड की प्लानिंग बेकार है मोर देन की साइनिंग्स खराब है। आई थिंक हुँ, दैट्स द केस। हुँ, हुँ, and who is it then? The president? Is it Deco? Is it letting Alemany go? Is it Jorge Mendes? Who is this responsible for the squad planning then? आई थिंक फॉर श्योर भाई ये लाइक जो लपोर्ता और जो भी वो स्पोर्टिंग, पता है वैसे वियर्ड इनफ, लाइक मैं, क्योंकि उन्होंने अलेमानी को निकाल दिया जल्दी, Hmm, इवन दो ही वाज डूइंग फाइन आई थिंक। अब आई डोंट सी द पॉइंट, डेको को इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है मेरे हिसाब से पर्सनली, और ही कम्स फ्रॉम एजेंट, एजेंसी वगैरह, एजेंट था वो, क्योंकि तो फिर वो उस साइड से आ रहा है। तो hmm, आई डोंट नो हाउ इट लाइक ट्रांसलेट्स टू स्पोर्टिंग डायरेक्टर, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट अच्छा भाई नोइंग द टैलेंट। hmm, एवरी टॉप क्लब नोज द नेक्स्ट एम्बापे, नेक्स्ट मेसी, एवरीबडी नोज दैट, hmm, एवरी वन ऑफ देम नोज इट। वो होते हैं जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना, उसके साथ फ्लर्ट करना, वो उसके साथ डिलीजेंस दिखाना कि भाई वी वांट यू, सारा वो जो hmm. केस है टू कन्विंस Yeah, yeah. देम, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन नोइंग द टैलेंट। डू यू थिंक तुमने इतने स्काउट बिठा रखे, इतना पैसा खर्च होता है, मैं कर सकता हूँ भाई स्काउटिंग, गिव मी अ वाई स्काउट, Hmm, मैं स्काउटिंग कर दूंगा बारसा के लिए। यू hmm. डोंट इवन नीड टू डू ऐसा कुछ क्रेजी लाइक अलग जाओ, पर्सनली जाओ, तो वो केस है ही नहीं है। आई Yeah, थिंक टैलेंट it's आईडी about इतना वो है ही building नहीं, the इट्स अबाउट relationship. हाँ, convince करना कि अब एग्जैक्टली, come to the club. दिमाग वाली It's चीज भाई, our project over एक्सपीरियंस। everyone's. Hmm. यप। और उस Yeah. सेंस में डेको को लाना, इट मेरे हिसाब से डजंट मेक सेंस, क्योंकि आलेमानी एक्सपीरियंस बंदा था, इट मेड सेंस। अगर तुम्हें सिर्फ स्पेशली टैलेंट आईडी वगैरह के लिए लाना था ना कोई, Hmm. तो ब्रिंग अनदर गाय जो सप्लीमेंट करते हैं इस सब में। इफ यू वांटेड सम क्राइफ, कोई ऐसा जो तुम्हारी, क्योंकि वी हैड गाइस, मतलब हिस्टोरिकली बारसा में हमेशा वो रहे हैं जो मेथोडोलॉजी वगैरह, आई एम फॉरगेटिंग द नेम्स ऑफ दोस गाइस, एनीवेज मैं फॉरगेट करो, लाइक बहुत जो Hmm. फुटबॉल की हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, लाइक स्पेशली बारसा की हिस्ट्री में, Hmm. जिन्होंने वो गेम, आप पता नहीं आपको कितना पता है, लाइक एक फेजेस ऑफ प्ले करके Hmm. एनालिसिस और कोचिंग वर्क में, ये सब बंदे थे जो बारसा की मेथोडोलॉजी लिखते थे फॉर कोचेस, फॉर हमारी एकेडमी वगैरह। Hmm. तो ये बंदे हमेशा से इन्वॉल्व रहे थे, Hmm. और आई थिंक दैट वाज व्हाई क्लब इतना चल भी रहा था अच्छे से। आई थिंक अब वो केस थोड़ा चला गया है, लपोर्ता केम इन, उसने बंदे हटाए, अपने बंदे डाले, Hmm. तो थोड़ा वियर्ड तो है फॉर श्योर। आई थिंक वो, पर ये नहीं है कि भाई टैलेंट आईडी खराब है, मुझे लगता बारसा को नहीं पता कि एंड्रिक कौन है, या बारसा को नहीं पता कि एचेवेरी कौन है, या Hmm. बारसा को नहीं पता मॉस्कराडो कौन है, दे नो भाई, दे नो। Hmm. बाकी सब Hmm. एक्सक्यूजेस हैं। Hmm. Yeah, no, I completely agree. I think having a competent backroom staff is very important, which is why I'm keeping a very close eye on how Man United is rebuilding under the new ownership. They're getting हम्म। important people, बंदे। Ashworth and bloody hell, Barada and everything. आई Like, थिंक इनफैक्ट इवन विद आर्सेनल का जो ये पूरा लाइक बिल्ड, वो वापस से hmm, रिसर्जेंस है, hmm, उसमें सबसे बड़ा हाथ भाई इसका है, लाइक जो प्लानिंग का है, मोर देन, मतलब ऑब्वियसली आर्टेटा का इतना बड़ा हाथ रहा है, पर व्हाई वुड दे, लाइक जस्ट नोइंग कि आर्टेटा वाज गोइंग टू वर्क इज सच अ डिफिकल्ट थिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा।
नोबडी वाज़ ऑन दैट राइड। जब मैंने बोला था ना कि भाई आई हुँ, रिमेंबर इट वाज़ अ, कौन-सा सीज़न था जब आई एम फॉरगेटिंग कौन-सा सीज़न था। आई थिंक आर्टेटा का 2nd या 3rd सीज़न था। हुँ। अच्छा वो फर्स्ट गेम हारे थे ब्रेंटफोर्ड से आई थिंक 3-0 या Yeah, 3-1 we lost वो not कौन 2-0 to Brentford that day, yeah. हाँ, वो को जो भी सीज़न था। हुँ, आई रिमेंबर उस गेम से पहले या समथिंग आई डिड अ पॉडकास्ट विद यश या कोई हुँ, एंड आई वाज़ लाइक कि मैंने पिछले सीज़न जो आर्सेनल देखी थी एंड आई वाज़ लाइक कि अच्छा कि आई थिंक ही विल वर्क आउट लाइक आर्टेटा विल इवेंचुअली वर्क आउट और वो मुझे याद है आज तक इट वाज़ हुँ, सच अ वाइल्ड थिंग टू से कि आर्टेटा विल डू गुड क्योंकि उस सब लाइक नथिंग वाज़ गोइंग देयर वे लाइक क्योंकि कुछ फिनिश नहीं हो हुँ, रहा था टॉप 4 वगैरह लाइक एटलीस्ट हुँ, रिजल्ट वाइज़। yeah, पर and भाई I तुम ये देखो कि जो mhm, आर्सेनल का ये था स्टाफ लाइक इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग क्योंकि दे न्यू एग्ज़ैक्टली भाई दे उसको साइनिंग्स दी, उसको ट्रस्ट दिखाया। दिस इज़ कॉल्ड एक्चुअल ब्रेन ऑन लाइक फ्यूचर साइड भाई दे न्यू व्हाट वाज़ गोइंग ऑन इन द क्लब। हुँ, दिस नीडेड मोर देन बस saying कि अच्छा टैलेंट आईडी अच्छी है। टैलेंट आईडी फ़ार्स चीज़ लगती है मुझे मतलब थोड़ा-सा ओवररेटेड हुँ, लगता है। सब टैलेंट आईडी का वो बहाना मार देता है कि टैलेंट आईडी खराब है। हुँ, भाई इट्स सब क्लब्स को पता ही होता है इवेंचुअली इट्स अबाउट कि तुम बाकी सब चीज़ें कैसे करते हो। mm. Yeah, no, Karthik Bhai is also right. That was the season they offloaded Oba and Laka. Laka to still stayed more than Oba, Karthik Bhai, but yes, that season was completely wild. He lost to Brentford. Oh God, man, it was a terrible season actually. 21-22 was a terrible season. Three, I think, वही season था जहाँ पे we were bottom of the table or something like that. Um, Laporta has done with Tiki Tick before when he was nobody. For 3 million दूंगा 3 million में signings करके बता आई एम यार नॉट क्लेमिंग टू बी अ सेवियर अगेन मैं वो नहीं कह रहा कि और मैं ये भी नहीं कह रहा कि लपोर्टा इनफैक्ट मैंने कहा ये वो जो साइनिंग्स थी मोर आई एम लाइक पॉजिटिव साइड पे ही है मेरे हिसाब से जो हुई थी। पर हुँ, मैं चाहता हूँ कि जो हमारी सिचुएशन है हुँ, उसके हिसाब से स्टिल शुड बी बेटर और हुँ। कम ऑन भाई मतलब अब मैं बेटर भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता क्या कांट आई एक्सपेक्ट कि अच्छा दे कैन डू बेटर देन दिस आई डोंट Yeah, इवन नो। just don't take criticism as चलो कोई बात नहीं we get stuck into that loop. Before या we move on, yeah, 45 minutes have gone by. 300 plus people are watching. Guys, like the stream if you haven't, and subscribe if you're new. Check out Chonky in the title. Yeah, like I've said, I don't give my recommendations willy nilly. There are very few channels I recommend, and I recommend Chonky wholeheartedly. Man, check him out. Check him out. Suman says you guys don't have a DMV. Madrid have two of the best DMs. Lol. Who is that? Chuamani and पता नहीं क्रूस आई डोंट नो। I don't know. But okay, yeah, no, of course, यार. I think squad planning के मामले में तो Real Madrid का I don't think there's an equal to that. It's Ponky, it's not Chonky. All right, thank you so much. I am learning. I am learning the culture. Yeah, for the culture, I'm learning. Um, okay. Now you say on the positive side, the signings have been okay. What do you think is the way forward? Now, my I'll give you my perspective. My perspective is if you want short to medium term, because clearly I don't think some clubs are built for long term projects. I don't think Chelsea is built for a long term project. I हम्म think the fans absolutely annihilate any Acha Kamavinga, okay. Annihilate any manager if he doesn't perform मैनेजर well. I think United aren't also built for it, but owners are at odds with that. That's completely fine. I think Arsenal are okay for a project. I think the fans in general are a lot more tolerable. Some of them are a lot more tolerable to uh, a project. I don't think Barca is built for a project. Like conventional wisdom will suggest that you need a stable project to compete regularly, but I don't think Barca is built for it. So, what do you think is the way forward? For me, since the व्हाई short डू यू थिंक and बार्सा इज नॉट बिल्ट फॉर इट लाइक वो कल्चर और जो सब एसोसिएटेड है इस वजह से। I think the success is so recent that it is almost impossible to separate Barca in this new age. There has to be a post Messi Barca where people don't realize कि Messi one of the greatest players of all time. मैं तो ये भी नहीं कह रहा इस generation का of all time, right? In all time list he will be one or two depending on who you ask. ठीक है? Um, he has left. He is not a part of the club. And मैं ये नहीं कह रहा कि he was the only one carrying the club at the back. Of course, Javi, Suarez, Villa, Henry सबके contribution होंगे इसमें. ठीक है?
हुँ, But that player has left. You are now in a new reality. If you keep looking back to, but हम ऐसे तो थे जब मेसी, सुआरेज, नेमार थे, एंड जावी, इनिएस्टा, बुस्केट संभाल रहे थे मिडफील्ड. अब हम ये क्यों नहीं कर हुँ, पा रहे हैं? गेट मी अ मैनेजर. लाइक देयर वाज दिस, अभी यहाँ पे हमारे कमेंटर भी कह रहे थे दैट पीपल गेट रियली इम्पेशेंट विद द मैनेजर्स, एंड आई थिंक देयर इज some sense to that, because the success is so recent. It's not that 20 years mein Barca have not won the league title. The success is so recent, that it's impossible to disassociate Barca in a new reality, मेरे हिसाब से. And so, हुँ, the second you will start making a project, the fact that after winning a league title and a Super Copa, it is still not enough for the fans, for the media, call it whoever is driving the narrative at Barca. Ki yaar, this coach is not worthy of our trust, not worthy of our patience. That the coach himself says that I have suffered despite winning a league last season. मुझे नहीं लगता हुँ, Barca is built for a project. They are built for sustained success in the sense of get us a trophy, at least a trophy every season. At least give us something to celebrate every season. Because the second the trajectory ऊपर से थोड़ा सा नीचे होता है, it's like a small market correction kind of thing. The second it corrects a हुँ, bit, जहाँ पे consolidation का time होना चाहिए, वहाँ पे the fans lose it, the media loses it, and the coach is not able to cope. Which is why when you were saying कि बारसा को you need a manager with balls, a manager with personality to handle all of these things. Being हुँ. Catalonian also makes the job harder. I don't know, man. I don't know. I'd say Uh, it makes easier भाई जॉब तो लाइक कैटलोनियन में तो yeah, आसान ही होगी. I won't. Yeah, I won't comment on all of that stuff. So मेरे हिसाब से, yeah, losing El Clasico 2 out of 2 sucks. But look at how many years. Like last season, you beat Madrid को कितने 4 Clásicos में, if I'm not just हाँ, mistaken. 3-4 कुछ ऐसे हाँ. Yeah, something for that. मुझे नहीं लगता Barca is built for a project. And so if short to medium term is the trajectory for Barca, I think selling to buy. You have to sell the big one of the big names. Now, for some, it'll I think the most obvious answer is Frankie. Um, for others, it'll be somebody said. When I say somebody, I mean like there's a considerable amount of people I saw. मैं ऐसे ही हवा में, there's not one random person I saw. Some people saying that Araujo, take that Araujo money, man. I know he's one of the best in the world, but it helps us out a lot. Frankie ka because of his wages, because of his price, and also he's in demand. What do you think is the way forward? Is because I don't believe that जैसे लोगों का होता है ना कि ओरियल को बेच तो 5-6 मिलियन में, क्रिस्टेंसन को बेच तो ऐसा 20-30 मिलियन में, कुंडे को बेच तो 50-60 में, लाइक ऑल द हाँ, प्लेयर्स दैट वी रियली डोंट वांट उनको बेच दो, ऑल द उनको प्लेयर्स दैट भेज वी दिया रियली हाँ, रियली वही. वांट उनको रख लो, एंड थिंग्स विल वर्क आउट दैट वे. हाँ, I वो don't तो think that's the way इन्वेस्ट forward. Like this, like sell Ferran, Rafinha, and Leva. Okay, I can even say कि Rafinha के लिए still there's a big market for right wingers. So Rafinha को you can still sell. But Leva, unless you're selling him to Saudi, and like I was saying, bhai, this assumption that Saudi is waiting for Leva somewhere, I don't think will work. Simply because one, Mo Salah is going to be available this summer. Most of that Saudi money is going to go for Mo Salah. If you are charging 50, 60 हुँ, million for Lewandowski, there are plenty of young and emerging talents that Saudi can poach. There are also older talents like someone in the ilk of Mitrovic जो जा चुके already, जो सस्ते में भी मिल जाएगा and get them the same outcome. Salah will go to one of the big ones like Al Hilal or Al Nassr or whoever it is. Salah will go हुँ, to one of those. Most of the big clubs with the big money that will poach Salah because Salah is an Arab icon. यप. Kunde को बेच तो minimum 80 million मिलेगा. See, the thing is, you are not the only one selling center backs in the market. He is young, he is good, he's talented, he's experienced. All those points well taken. But clubs will be looking at, I don't know, uh, Diamonde, your Inacios, your Lenny Euros, and everything. And if those can come हुँ, in 40-50 million, people will not pay 80 for Kunde. And that's the thing. आप लोग ट्रू. अपने प्लेयर की वैल्यूएशन समझ रहे हो, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट आई थिंक देयर टू मेनी सेलर्स इन द मार्केट एज वेल. ट्रू भाई, पर आई थिंक सेल तो करेंगे भाई. आई थिंक फर्रान, राफिनिया ये सब बंदे कोई तो जाएगा फॉर श्योर नेक्स्ट सीजन. आई थिंक समबडी इज गेटिंग सोल्ड. पर आई थिंक वो भी इंटरेस्टिंग वो है लाइक पर्सपेक्टिव कि यू लाइक फॉर बार्सिलोना इट्स अ वेरी बैड साइन इफ यू सेल योर बेस्ट प्लेयर्स लाइक सेलिंग फ्रेंकीज, सेलिंग अराउज. वो एक ऐसी ऐसा एज है
जो यू डोंट नेसेसरली वांट टू लाइक बी एट। Hmm. वो बहुत वो है भाई। आई थिंक वो अगेन भाई बहुत भयंकर फोरसाइट चाहिए भाई। इफ यू हैव एनीवन इन आइडिया कि अच्छा जो मिडफील्ड का बैलेंस ला देगा आफ्टर फ्रैंकी गोइंग, डू इट। पर वही बात है कि कहाँ से लाओगे भाई ऐसी क्वालिटी और बजट में, और ये सब बहुत वो है। पर दिस वेरी बॉल्जी मूव होगा अगर हम फ्रैंकी अराऊ वगैरह इनमें से कोई सेल करते हैं ना। अराऊ Hmm. सेल करना आसान है मेरे हिसाब से, लाइक गेटिंग अ गुड सेंटर बैक भाई। मजाक भी नहीं, आज तो लीग में 3 वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक्स मिल जाएगा तुम्हें, लाइक एटलीस्ट Hmm. उस प्रोजेक्शन। तो Hmm. सेम डियो मांडे मिल जाएगा एक पोर्चुगल में, एक तुम्हें कहीं साउथ अमेरिका में एक और मिल जाएगा। तो वो आई थिंक अराऊ मेक सेंस। फ्रैंकी ऑल्सो मेक सेंस क्योंकि फ्रैंकी विल गेट यू द बिग बक्स। आर्सेनल वगैरह कोई ना कोई तो जाएगा फॉर श्योर फ्रैंकी I के think लिए। Frankie Clay, you will find सिटी, suitors from आर्सेनल। everyone from हाँ, United, Chelsea, even City for that matter, if they हाँ। want to. आई थिंक बायर्न भी रेडी होगी इफ Yeah. फ्रैंकी इज, फ्रैंकी ले तो आएंगे बंदे। He is your most sellable asset. So my way forward is sell your most sellable assets. I know people are not in favor of कि यार नहीं बेचनी चाहिए. It turns into a pretty bad cycle that Arsenal was also part of. Fabregas, Nazari, Van Persie, Adebayor हम्म। kept selling our best player every year. चलो वो भी हमारी financial मतलब उसकी मजबूरियां थी कि we had to pay off the stadium and everything. But we, yeah, once we kept losing those players, it kept getting worse for us. वही Um, एग्जैक्ट। yeah. So the भाई पता है one पर क्या है, hmm, दिस इज वेयर लाइक मुझे लगता है गोल्ड माइन पे भी थोड़ा बैठी है बारसा। academy. कि इफ यू हाँ कि मतलब कर दोगे ना फिर भी कुछ एकेडमी तुम्हारा काम चला देगी। लाइक यू विल सेल बाय। भाई अब जैसे लमीन If रैंडम भाई, somebody offers मतलब 40 जिनको or पता है उनको 30, पता है पर 30, 40 for Lamine, would you take it? इम्पॉसिबल भाई, इम्पॉसिबल। Mm, आई थिंक लमीन व्हाट ही इज राइट नाउ at 16. इज अ 70 मिलियन प्लेयर एटलीस्ट Mm. राइट नाउ। भाई इज बेटर देन रफीना ऑलरेडी, लाइक मतलब मजाक भी नहीं कर Mhm. रहा है, इट्स नॉट I इवन agree, I agree, I agree. एटलीस्ट बारसा में तो इज बेटर देन रफीना, जो बारसा में दोनों खेलते हैं। तो भाई मेरे को लगता है तुम्हारा काम चल जाएगा लाइक एकेडमी से, इफ यू डू फ्रेंकी। क्योंकि वी हैव वो मार्क बर्नाल करके एक नंबर 6। और Mm. आई डोंट नो और भी कोई इनके दिमाग में हो अब ये साइन कर रहे हैं जैसे लूकस बर्गवाल वगैरह, आई डोंट नो Mm. प्लान क्या। तो पर ये रिस्क अगेन पता है, मैं इस पे वो नहीं करता, क्या कहते हैं, आई वुड नेवर सेल माय बेस्ट प्लेयर्स लाइक, क्योंकि फ्रेंकी आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एट बारसा। तो आई वुडंट सेल हिम। Okay. In the और पता है in क्या है, term, मार्केट mm, में कोई है भी नहीं गुड। अगर मान लो राइस जैसा प्लेयर या फिर मतलब उस कैलिबर का प्लेयर mm. कोई होता मार्केट में, देयर इज अ पॉसिबिलिटी आई एम डूइंग इट। I would say कैसे नाउ अब मेरा दिमाग चल गया। मिस्टर आप बोलो, मैं आपके बाद बोलूंगा। for me, I think there are plenty of people on expiring contracts that can sail you for a year at least. I will only speak Arsenal names because I think there are some Arsenal players that can fit very well into एल नेनी। Barca. Not El Neni. I was thinking more around Jorginho. I think Jorginho is a decent player. He might not हम्म। give you 2 3 ओके। years. I think Thomas Partey is on an expiring contract. उसका contract खत्म है इस summer or next year, हम्म। something like that. I think you can get Thomas पार्टे यस। Partey on very cheap. I think you can do it. भाई पार्टे Uh, तो फॉर श्योर, पार्टे इफ पार्टे इज अवेलेबल। I think he will be. And I am honestly telling you, Partey, we will even sell for 25. I know for a fact we'll sell him for 25. The only thing you have to manage with Partey is his injury, is his हाँ that's it. इंजरी का है ये, ट्रू। And I will बट say भाई that पार्टे इज your स्टील medical भाई। staff isn't not well renowned. हाँ Let's just say लिटरली। that. Like we have to send a physio with Partey when he goes to international duty. हाँ That's ऐसा the कुछ level देखना of पड़ेगा management he एग्जैक्टली। needs. Um, in terms of like other young talents, यार see, I don't think Ben White, Nelly जैसे कार्तिक भाई ये तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे. But expiring पे अगर आप देखो, I'm not saying you should settle for an El Neni, but I think you should भाई go ऐसे for एक अच्छा शाउट है। hmm, पता नहीं मुझे यूवेंटस का क्या सीन है, इफ यूवेंटस सेल्स लोकाटेली, hmm, उसका कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा लोका। hmm. I if I was a Barca fan, I would हाय। be.
शाउटिंग फ्रॉम द रूफटॉप्स कि भाई देखो पलीनिया ब्रिंग बोलना तो आसान है न्यूट्रल एफसी, बट पलीनिया के लिए यार वो 90 मिलियन 80 मिलियन तक लेगा फुलम यार. ट्रू, uh, हाँ, पलीना पलीना that's मैं भी ले that's too लूँगा भाई, वो expensive, which बहुत is why एक्सपेंसिव। I'm thinking इफ more on the मैं lines वो of कर लूँ, expiring contracts. ओनाना भी कर लूँ, इफ ओनाना कम्स फॉर 40 Amadou मिलियन। Onana. यप, I ही think इज़ यंग Amadou एज़ वेल। Onana, there'd be too much competition. Like you will get outbid for Amadou Onana, or you'll get हाँ, entrapped in the bidding war. One of those things. ट्रू। Nobody will let you have Onana for 20 millions. Palinia is 32 old. Again, we don't have to think about the fact कि ये आपका next 10 year का project player बन जाएगा स्वागत हो. I think it's about अच्छा, पर एक बहुत अच्छा शाउट है, शिट आई फॉरगॉट, hmm, रेडोंडो अवेलेबल है फॉर लाइक 9 मिलियंस। there is I have a feeling जब कोई player जो बहुत obviously social media पे in general media पे hyped होता है, but very few हाँ, तो clubs are ज़्यादा going for एक्सपेंसिव him. होता है। नहीं, it's either that he's ओह! too अच्छा, expensive or there is some red flag that मैन, we are not privy to. इक, द You know, इक। like that there is some, हुँ, जैसे you were saying yesterday, there is the something smells fishy over there. And I हुँ। will say it could be an attitude thing. I don't know. We don't get any sort of, privy to all that sort of information. Ki like, I think, for example, I think Arteta is super wary of red flags. He is super wary ki like, ye banda ka agar, if he speaks to the guy and he's like, इसमें red flags हैं, we're not going to go after him. तो हो जाता है, we don't go after the guy. Um, नहीं, ये तो होता है। यू आर करेक्ट। Still the money which we'll generate selling Frankie can't be utilized fully since we are way above our wage cap. That is true. You 80% of your revenue is into हाँ, wage caps. If sold for 100, we could only use 40 million. Hence, point. Just have patience. Hmm. Yeah, I mean that sort of makes what you're saying. No, not sort of. It definitely makes sense, Abhijit. But वही है. तो either sell your sellable assets, get a chunk of money, get some players on an expiring contract who can fill the ranks, जिनको सिर्फ you have to take care of registration and not the transfer fees and signing bonus. Fine, signing bonuses तो करना ही पड़ेगा, but register हो जाए. Or like what Chonky says, your gold mine which you're sitting on, sell your, जैसे आपने आप दे you sold this year, you sell a couple more, 3 4 more. For example, फब्रीजो ने किसके लिए बोला था, अभी आया था ऑफर, मिकेल फाई मिकाइल के लिए फाए था. और हुँ, You sell that, but is that what you want? Sell Gavi maybe. I would be heartbroken if Gavi is sold. I think he's like a perfect काफ़ी तो नहीं encapsulation of आए। soul of Barca. I हाँ, would say no. और मेरे को समझ नहीं आता लाइक 18-19 ईयर ओल्ड्स जो तुम्हारे लिए फर्स्ट टीम में इतने मिनट्स खेल रहे हैं, स्पेन के लिए इतने मिनट्स खेल रहे हैं, Hmm. इस एज पे तो उनको सेल करने का पॉइंट नहीं भाई, दे विल हिट देयर पीक वैल्यू व्हेन दे आर 24 समथिंग। अगर तुम्हें सेल करना ही है इवेंचुअली, लाइक अगर तुम्हें लगता है यू कैन अपग्रेड ऑन देम, तब सेल करो। व्हाई Hmm. वुड यू इन एनी माइंड सेल लाइक अ 18 ईयर ओल्ड गावी, 19 ईयर Hmm. ओल्ड गावी? सेंस ही नहीं बनता कुछ। Yeah, no, Anushesh, yeah, वो ये problem है कि पैसे की बात है. How can they be so rich and poor at the same time? Well, they are rich because the club is a global brand. It attracts a lot of sponsorships and money. But the thing is, so much of that money is tied up in paying your wages. The biggest expense of a club is not the transfer fees you pay. वो anyways आप amortize कर लेते हो. But it's the weekly amount of wages you pay, right? I mean, सुनने में तो अच्छा लगता है. This player is only on 100K a week, but you हुँ, expand that 100K, it's like 4 million a month, and it's a 50-week wage structure which they go. So you are paying around what, 2 million, no, 20 million or something like that. I don't know, my calculation might be a bit off, but you're paying a lot per क्रेज़ी। year, right? So wages are the major chunk of what you end up spending your money on as a club, which is why Chelsea ने season wages कम कर दी अपनी. They sold it to Saudi. बहुत wage structure drop हो गया. हमने ओबामियांग, ओजिल वगैरह सबको निकाल के, विलियन वगैरह को निकाल के अपनी wages कम कर ली, so that we could offer Martinelli, Saka, Odegaard, Ben White, all these guys, Saliba, a new contract with improved wages and still keep it a bit low. A healthy wage ratio, according to Deloitte, is less than 60%. Arsenal are at just above 50. Barca is at 82. So that shows you कि financially the issue is that no matter how much money you earn on a weekly to monthly basis, you're spending a lot um, हुँ, on wages. And so this is why I'm more on the whole sell your sellable assets kind of thing, because your academy, you're not paying them any wages anyway. You might get a lot of large chunk of money,
But if your highest earners are still there at the club and you feel that there's not going to be a zada change in the performance, then I think you should get rid of the most pressing liability, which is your Person. wages मेरे हिसाब से 5 million a year for 100k. Yeah, so 5 million a year 50k में हो जाएगा, right? So 5 million a year is that you're paying for a 100k player, and now you say अगर किसी के with La Thank Liga you. bonuses around 700. 300k, right? So you triple that. That's Yeah. 15 million per year on a 5-year contract is 75 million is what it's costing you. And so that's it. Sell Roberto first. That's Again, crazy, man. you can sell your Robertos, you can sell your Christensens, you can sell your Romeos, but क्या बट वो मिलेगा उसमें? डेंट ही करेंगे बस, वही Yeah. एग्ज़ैक्टली, ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। Hmm. Um, चौंकी की तबीयत एक दिन में 100x स्पीड से ठीक हो गई। लगा रहा है मॉर्फिन के भाई इंजेक्शन। मैंने इतनी कफ सिरप और पता नहीं क्या-क्या लिया भाई, अब तो अगर अब नहीं होनी थी तो लिवर खराब हो जाना था, मतलब दिस वाज़ द लिमिट। Oh damn, is it that bad, huh? काफ़ी टाइम लगा है। I would say sell Rafinha, Fati, Iñaki Pena, Pablo Torre, either of Kunde and Christensen, and get Zubimendi. Okay. Do you think? I mean, Zubimendi is a fairly, I would say, popular choice from everyone. हुँ। Do you think there's other talents that people are not looking at? भाई आई थिंक अगर रेडोंडो की बात करो, देयर Hmm. इज़ दिस वन अदर गाय ऑस्कर ज़म्ब्रानो, Hmm. वो इक्वाडोरियन है शायद, इक्वाडोरियन या पता नहीं कोलंबियन। I've heard of him. I वो think, yeah. वो काइसेडो कौन-सी कंट्री का है? इक्वाडोर का है या कोलंबिया का है? He's Ecuadorian. हाँ, तो इक्वाडोर का ही है। Hmm. ज़म्ब्रानो भी। आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बॉर्नमाउथ एंड पता नहीं कोई और उसके लिए बॉर्नमाउथ जा रही है। तो Hmm. वो ऐसे-ऐसे टैलेंट्स हैं जो बहुत हैं मतलब। और Hmm. देयर इज़ वन अदर आई थिंक सर्बियन गाय, Hmm. आई एम फॉरगेटिंग हिज़ नेम, बहुत अजीब-सा नाम है। नंबर 6 की बात करो तो वो बंदा चैंपियंस लीग भी खेला था इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस सीज़न। Hmm. ये सब बंदे हैं कुछ जो अच्छे-अच्छे लग रहे हैं। भाई अब मैड्रिड नोबडी केयर्स अबाउट मैड्रिड लेजेंड। मैड्रिड पे चुआमेनी वगैरह हैं। देयर इज़ नो वे रेडोंडो इज़ गोइंग टू मैड्रिड। Hmm. बार्सा इफ अगर बार्सा कल जाएगी ना Hmm. रेडोंडो पे, रेडोंडो डज़न्ट गिव अ शिट अबाउट कि उसके फादर कहाँ खेलते थे। लिख के ले लो। Hmm. ये तो डज़न्ट मैटर भाई। Thank you so much, भाई आई Krish. I थिंक hope. एक So, एक एक जो second. टैलेंट है जैसे हाँ, हाँ. बोलो। Krish, thank you so much, yaar. I hope your exams went well and everything, yaar. And thanks for coming on the stream, yaar. And 400 people are still here. Video like kar do if you haven't. Let me see. There's only been 200 likes, yaar. Let's try and hit 300 ASAP, man. And again, check out Chonky, man. He's growing as well. Chonky, कितने subs हो गए थे तेरे before the stream? आई थिंक 8.2 के समथिंग, Guys, 8.2 या let's try to get him at least to 8.5, man. Let's try to get him to 8.5 at least. जितने भी हो जाएंगे, all support is of course appreciated. Um, Sorry, Chonky, you were saying something. अब मैं भूल गया। वैसे मैं कह रहा था कि राइस वगैरह पे Hmm. स्नीकी बिड। Sneaky bid on rice. स्नीकी Fair 5 enough. I मिलियन। mean, you can वो आ जाएगा ना monitoring Declan Rice and I'll just tweet out they can monitor these nuts. वही होगा भाई. नाइस। If we can get some free agents, then that's IMO is better rather than some hyped up kid. Not all wonder kids turn up to be Vinicius. Some even turn out to be Marco Marin, and we can't take risks. Avijit, I understand, man. The thing with free agents is now the fact that you're not paying a transfer fees means you're going to pay it wages. And I just explained wages and वेजेस clubs का क्या वही। scene होता है. Um, yeah, man, he's a great guy. Can City sell Rodri to Barca? I think if on a scale नो of चांस। yeah, I don't think it's gonna happen, man. Yeah, I would say not. Who is staying at Spurs भाई? चलो कोई ना कोई Spurs पे रह रहा है. राइस के चक्कर में क्लब जाएगा तेरा तेरा क्लब जाएगा चले जाएगा इसमें. Yeah, man. Rice, I don't think. We worked really hard, man, to get Rice. Rice तो खैर कभी नहीं आना है. मिस्टर लापोर्ता पेड, Mr. डोंट लाफ Laporta, पे। pay and don't speak. यस। This would be, I think the only scenario this happens is if Pep leaves. Without हाँ, that, ऐसे I ही don't think it's happening. Without, है। yeah, I don't think it happens without Stefan Bajcetic from Liverpool. Rakitic, Okay, he's tell me also this good. as a strategy and not like a Barca strategy.
Do you think Liverpool right now is ripe for picking off in terms of like now Klopp is leaving? Nobody भाई knows फॉर what. श्योर। मैंने वो देखा था अभी रिसेंटली, वैन डाइक का क्या कहते हैं He इंटरव्यू, उसने doesn't कुछ know where बोला the था। future, what the future भाई holds मैं in him. मजा एग्जैक्टली भाई, इट लुक्स लाइक एक्चुअल में एंड ऑफ ए साइकिल, मजाक भी नहीं। Hmm. वैन डाइक कह रहे हैं भाई इट्स अ बिग बिग डील, आई थिंक और भी प्लेयर्स यू कैन डेफिनेटली पिक देम ऑफ। I think Salah will पर leave, देखो but ऐसा, he'll leave to Saudi. I think Van Dijk will be too expensive to buy. साला का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है क्या, या फिर Yeah, yeah, है yeah. भी उसको? I think Let me just check it, but double check करना है contract expiry. I think he has one more year after this year, 24, 25. So next season it'll expire next summer. फिर मुश्किल है, बट कम Even if ऑन। it wasn't, he was genuinely just going to go to Saudi. Yeah, I think he'll go to Saudi. Salah will leave for Saudi for sure. Van Dijk का contract ends at I think same ही होगा. Expires 2025. Thiago, would you take Thiago Alcantara back? नो No. भाई, Why? इतना इंजर्ड होता है, कोई पॉइंट ही नहीं है, That's लाइक true. वो He's तो not शायद played पार्टी for a से भी year ज्यादा now. इंजर्ड होता। Hmm. वही। So let me just see. Thiago's contract expires this year. Joel Matip expires this year. Nat Phillips expires. Ryan Gravenberch. Oh no, he'll be bought for 40 million. Adrian, Sepp Vandenberg, Salah's 25, Van Dijk is 25, Trent is 25, but I think Trent will renew. I think he'll be the first Hey, renew. hear me out. Trent is 25. Okay. Mr. Laporta, pay and don't speak. भाई वी विल बी देयर। चाहे मुझे 3 अटैकर्स की Hmm. ज़रूरत हो, 1 सीडीएम की ज़रूरत हो, बट इफ ट्रेंट इज़ ऑन द मार्केट, Hmm. आई एम डिपिंग माय सॉस, मतलब डिपिंग माय टोज़ इन दैट सॉस। मज़ाक भी नहीं भाई, Hmm. मेक इट हैपन। अच्छा, एलिश गार्सिया वगैरह है, क्योंकि वो इस सीज़न खेला है नंबर 6 फॉर जिरोना, पर वो भी आई थिंक उसका भी कॉन्ट्रैक्ट है, बट वो फ्लर्ट ही कर रहा है ऑनेस्टली बार्सा के साथ। इट वोंट हैपन। Hmm. One underrated DM I would take is Palacios, Ezekiel Palacios from Leverkusen. बट ही इज़ Hmm. आल्सो नॉट डीएम, मतलब वो दिस इज़ लाइक इफ ही इज़ एज़ मच एज़ अ डीएम एज़ फ्रैंकी एज़ इज़ अ डीएम। Hmm. तो इट्स कुछ फ़ायदा नहीं होगा। Anusha says we need pacey wide wingers, a CDM, maybe a striker also. Sell Felix, Romeo, Rafinha, Roberto, kick Lava to Saudi. मैं उस सऊदी वाली तो खैर मैंने बात कर ली थी. Okay, what do you think Barca needs, Chonky? दे नीड क्लॉप एंड कुछ अच्छे बंदे उसके साथ, लाइक पता है, अगेन मेरे को तो Okay, लगता है मैं वी let me. डोंट नीड No, टू स्पेंड बिग। Klopp is a very common thing. Would you take his assistant Pep Linders? हाँ, वी गेट हुएवर क्लॉप वांट्स अपने एनवायरनमेंट में, मतलब उसको जो Would चाहिए। you take Pep Linders as the head coach? Because what I have read is हेड Pep Linders कोच, is the one. Yeah, Pep Linders is the one with the tactical gegen pressing that Klopp does. I don't know how true that is. Would you not take, or would you गीगन just प्रेसिंग नहीं चाहिए, वी डोंट गिव अ शिट अबाउट गीगन प्रेसिंग, okay? टिकी टाकी, 45 डिग्री एंगल डायगोनल्स, वी डोंट गिव अ शिट। भाई मेरे को Hmm. चाहे भाई अगर शॉन डाइस जीतता होता ना चैंपियंस लीग, एंड इफ ही कुड विन अ लीग अगेंस्ट पेप ग्वार्डियोला, Hmm. आई एम टेकिंग शॉन डाइस। Hmm. आई डोंट गिव अ शिट, आई डोंट केयर अबाउट तुम्हारे क्या तुमने थीसिस लिखा है, आई डोंट गिव अ शिट भाई। गेट मी समवन हु कैन विन। और पता है इट्स नॉट इवन अबाउट भाई, इट्स, डू यू रियली थिंक बारसा में इतनी बड़ी प्रॉब्लम गीगन, भाई गीगन प्रेसिंग Hmm. मैं जाके सिखा दूं गीगन प्रेसिंग, बंदों को यहाँ खड़ा करना है भाई, Hmm. पीपीडी फील्ड टिल्ट भाई सब, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी बारसा के लिए कि भाई लमीन को ट्रेन करो अच्छे से, पेड्री को ट्रेन करो अच्छे से, गावी को ट्रेन करो अच्छे से, रोके को ट्रेन करो अच्छे से, इतने सारे तुम्हारे पास यंग प्लेयर है भाई, मेक देम प्ले गुड, मेक देम Hmm. इम्प्रूव, जैसे आंचोलाटी करते हैं। वो सब गीगन प्रेसिंग वगैरह हो जाएगा भाई सब साथ, वो सिंपलर स्टफ है भाई, दैट इज सिंपलर। जो ऐसे गेम स्टेट वाली ट्रेनिंग होती है, जो प्लेयर्स की इंप्रूवमेंट हम मैंने देखी नहीं भाई लास्ट टाइम। आई हैवंट सीन अ सिंगल प्लेयर इंप्रूव एट बारसा, पता नहीं कब से। Hmm. वी नीड दैट। Hmm. Okay. I would say for me, my pick of the coaches for Barca will be Deserbi. I think he works perfectly within limited means. A lot of people are saying, "नहीं नहीं ये तो Brighton का press, Brighton की scouting makes हम्म, Deserbi look good." अच्छे। I think he is very strong on his
in terms of this is, I think he will be somebody who can instill an identity. But my idea would be that Barca needs a coach. Klopp is perfect. I completely agree. They need a coach भाई with पता है इनफैक्ट क्या है? क्लॉप के साथ मैं एक और क्या चीज श्योर हूँ, या क्लॉप या फिर कुछ स्टाशर का मैनेजर, hmm, कि भाई अगर क्लॉप के साथ ये बंदा वर्क नहीं कर रहा ना, hmm. कौन? तो भाई इसको निकालो। मतलब ये प्लेयर, इफ दिस प्लेयर इजंट वर्किंग विद क्लॉप, गेट दिस गाय आउट ऑफ दिस क्लब। अभी कोई मेरे को जेन्युइनली 100% श्योर होके मतलब ये नहीं बता सकता कि ये प्लेयर वर्क करेगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि हम मैनेजर्स ही नहीं लाए वैसे, Hmm, एनवायरनमेंट ही नहीं है वैसा। हाउ वुड यू बी श्योर? अंडर क्लॉप आई वुड बी 100% सर्टेन, मजाक नहीं कर रहा। इफ दिस गाय, लाइक ही इज नॉट हैपनिंग एट बारसा, अगर ये क्लॉप के साथ नहीं हो रहा, तो ही जस्ट इजंट हैपनिंग एट बारसा। इतना hmm. इतना इतनी चीजें सॉल्व हो गई भाई, यू नो हाउ टू सेल। तुम करते रहो डेजर्बी, तुम करते रहो अल्गुआसील, मतलब आइदर यू गेट लकी कि डेजर्बी इज द Hmm, नेक्स्ट पेप, hmm. वरना वही इसी विशेष साइकिल में हो। वी डोंट Yeah. नीड दैट 100 million डीएम, वी डोंट नीड दैट अटैकर भाई, वी नीड अ कोच, और उसको जो स्टाफ चाहिए वो लाके दो। Would you agree that in general, in the last few years, like the six coaches we talked about, all of them were brought in to get the best out of Messi plus the squad? And do you think it needs to pivot into get the coach and now give him the squad he wants? Do you understand? Like the relationship was समझ रहा हूँ, bottom पर up से top मिस्टर, down. समझ गया मैं, पर मिस्टर दक्ष, Hmm. आई रियलाइज दिस, दिल से मजाक भी नहीं कर रहा, दिस इज लाइक, आई नो दिस, कि द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, बेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड, they don't buy for the manager, they Hmm. don't give two shits about the manager, they just don't। Hmm. there is a reason why managers accept this reality कि भाई कुछ भी, this shit doesn't work out, they are out of the door भाई, क्योंकि Hmm. उनका देयर से सो, मतलब वो इतना सब कुछ कंट्रोल करते हैं भाई, दे हैव टू मेक इट वर्क रिगार्डलेस। मैं उनको क्लब ये दे रहा है, ये नहीं दे रहा, ये दे Hmm. आर द लाइक स्केपगोट, ओनली स्केपगोट, तो वो नेवर बाय फॉर द मैनेजर, नेवर। भाई ये बंदा चला जाएगा 2 साल बाद, शावी चला Hmm. गया, तुम उसके लिए खरीदते रहो, कोई पॉइंट नहीं है। क्लब चला गया मान लो 2 साल बाद, कुछ पता नहीं, कहने लगे आई एम टायर्ड, आई डोंट हैव द Hmm. एनर्जी, यू डोंट नो। प्लेयर का होता है कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का, 6 साल का, Hmm. तो भाई यू कीप द प्लेयर जो तुम्हें चाहिए क्लब में। और दिस हाउ भाई, बारसा जब बेस्ट थी ना, दिस इज Hmm. हाउ दे यूज्ड टू मूव, गेट द बेस्ट टैलेंट पॉसिबल। इट डजंट मैटर इसको ये चाहिए उसको वो चाहिए, इट डजंट। I'm trying to think right now because, for example, counterpoint. I think for Liverpool and for City, I think arguably two of the most successful clubs in England. They purely buy for Klopp. They purely buy for Pep. Pep to definitely. Pep पेप तो हाँ, आई wants. एग्री। और पता Yeah. है द ओनली रीजन व्हाई इट वर्क्स फॉर पेप, Hmm. एक तो भाई पेप इज देयर फॉर लाइक 7 इयर्स, 6 इयर्स, ठीक है, Mm-hmm. 6-7 साल से वो उनके साथ है। Hmm. पहली चीज, दूसरी चीज भाई, कैल्विन फिलिप्स कब साइन किया था? 2.5 years ago. 2 years ago. जब Leeds I think relegate हुई थी. 2 years ago. गोइंग नाउ, इस सीजन ही विल बी गॉन। He'll be gone. Yeah. पेप सबसे पहले, सबसे पेप डजंट सबसे सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है कि ये दिस शिट इजंट वर्किंग। पेप मिस्टेक्स करता है, पर पेप उसको, ही डजंट स्टिक टू देम, लाइक ही डजंट ट्राई टू मेक इट वर्क। Hmm. ये उसकी क्वालिटी, इट वर्क्स विद पेप, इट वर्क्स विद क्लॉप में भी, क्योंकि भाई अच्छा दिस इजंट वर्किंग, एक सीजन 2 सीजन गए। भाई बारसा में ये सब अटके रहते हैं भाई, इनकी वेजेस इतनी होती है, खुद प्लेयर नहीं छोड़ना चाहते, बहुत केस भाई। तो हमारे जो ये थे उमटीटी वगैरह, इनको निकालने में पता है कितनी प्रॉब्लम हुई है। Yeah, yeah, I know, I know. Yeah, because they're getting paid so handsomely. I think it's the same at United. एग्जैक्टली, Like people want to get rid of एग्जैक्टली, Rashford, एग्जैक्टली। sure, but who's gonna pay? You will not take a wage cut from 300K a week to like 100K at West Ham, man. कौन जाएगा? Maguire भी नहीं जाएगा एग्जैक्टली, इसलिए. Yeah, तो वही I तो। com- तो ये hmm, सुसाइडल स्ट्रैटेजी है, इट डजंट वर्क एट बारसा। यू गाय, तुम वो बंदे लाओ सिर्फ जो तुम्हें पता है लॉन्ग टर्म, लाइक बेस्ट ऑफ द बेस्ट, क्रीम क्रीम बंदे, वो लाओ hmm, जो वर्क करेंगे। कोच hmm, वगैरह तो सेकेंडरी है भाई, मुझे लगता है बारसा के लिए, मतलब सेकेंडरी इन द सेंस कि स्क्वाड बनाने के लिए सेकेंडरी है। यू गेट द बेस्ट स्क्वाड एंड देन हैव अ गुड मैनेजर हु कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम। यू डोंट बाय अ गुड कोच एंड ट्राई टू गिव हिम द बेस्ट स्क्वाड। Do you think? Okay.
Give me in order of probability of happening from most to not happening. Which of the following people can you, if you had to lure away from Man हुँ, City, would you be able to? Pep Guardiola, Tiki Belgristain, whatever his name is, हाँ, or चीकी बेलगिस Soriano? नोबडी भाई। Nobody. Do you मैं think ना City is such a perfect working machine that even a call from Laporta for Barca will not appeal to any three of them? भाई एक तो मेरे को लगता है पेप थोड़ा स्कीमी लायर है लाइक वो ही आई डोंट इवन नो ही मीन्स इट एज़ मच ऑनेस्टली लाइक ही Hmm. ठीक है बोल देता है बट इट मतलब वो फैन की तरह है आई डोंट थिंक सो वो इतना इतना Hmm. टेंशन लेना चाहता है। तो वो तो ही इज़ आउट। ऊपर से चीकी और सोरियानो की बात है, भाई मैं इतना सिटी को समझता भी नहीं कि दे आर इतना फुल प्रूफ ऑर्गनाइज़ेशन कि Hmm. चिकी और सोरियानो ने ऐसा काम करा है कि दैट वी कैन नॉट गेट दैट आउट ऑफ समबडी एल्स। मुझे लगता है Okay. आलिमानी इतना बेकार है चिकी से। मुझे नहीं लगता कोई और अच्छा जो सीईओज़ वगैरह होते हैं वो Yeah. जो शायद अभी रेवेरतर है जो भी हमारा आई फॉरगॉट द जॉब है हमारा करंट Hmm. सीईओ वो उससे फेरान सोरियानो से इतना बेकार होगा। भाई द डे पेप लीव्स वील बी देयर मैं मज़ाक नहीं कर रहा। प्रीमियर लीग आई विल बी सिटिंग विद वेस्ट हैम फैन्स, आई विल बी सिटिंग विद नॉटिंघम फैन्स, वी विल बी देयर। द डे पेप लीव्स 115 चार्जेस 116 हो गए आफ्टर Hmm. काइल वॉकर भाई मैं मज़ाक नहीं कर रहा इट्स पेप इट्स नॉट चीकी और ये सब मेरे को नहीं आई डोंट बाय द हाइप You अराउंड think? से You think? उनमें Yeah. पैसा है बस बट इतना खतरनाक नहीं है। Hmm. Okay. One last topic before we move on, so I can give make sure कि आपके you're also like not too sick after this stream. हुँ। There was this news. Of course, now it's falsified. Ki Arteta to Barca. First of all, what do you feel about Arteta to Barca? भाई Is it like it should never happen, or you think it'll happen just not right now? पता है क्या है? You don't मैं have to be बार्सा like an फैन से हूँ। Arsenal channel पे. You can be super honest. भाई आई एम बीइंग ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ हाथी जो आर्टेटा ने बोला है ना वो वैसी चीज़ है कि दैट्स द उसको बोलना ही है। ही कैन नॉट लाइक देयर इज़ नो वे अगर वो ट्रुथ भी होता ना, देयर इज़ नो वे इन हेल कि आर्टेटा एट दिस पॉइंट जो उनके Hmm. एस्पिरेशंस है फॉर दिस सीज़न वो बोलता कि हाँ भाई मैं जाने वाला हूँ। दैट्स ऑल आई एम गोना से और मुझे पता है अगर बार्स मैं मज़ाक नहीं कर रहा भाई। बा पीपल से अब वो कुछ भी कह रहे हो भाई पुल है देयर इज़ स्टिल अगर बार्सा जाएगी फॉर आर्टेटा आई डोंट नो Hmm. लाइक आर्टेटा एंड बार्सा इट्स गोइंग टू हैपन मे बी इट डजंट हैपन नेक्स्ट ईयर Hmm. but it will happen. You can write it on the stone. It's going to happen. I think so too. I think their paths will cross. I think he's destined to go Messi there. क्या है exactly वो उसका पूरे roots हैं everything. He'll be there I think and he'll be we there. will be there भाई. But We I will. think Saka to Saka to Barca 2028. What? I think to get a decent shot at turning Barca around or keep getting Barca to that next level, I think he needs time he will need to build some sort of credibility at Arsenal. True, Hype true, पे नहीं true. चलेगा. Like this ये is तो है. now like right now it's pure hype zone right now. Um Everyone is आपके क्या the narratives is he's लीग को bottled the लेके? league, he's done this, he's done that. I honestly I'm so tired of even countering all of those things कि मैं क्या ही बोलूं. ठीक है यार, मतलब fine, whatever, you don't rate Arteta, I can't do anything. I think you have to be absolutely perfect to compete with Man City. Like you don't वही have है to be great or excellent, you have to be perfect. ठीक perfect है? true facts वही. And look, man, I personally think the team is primed. Maybe not this season, maybe not last season. I think the team is primed to take over whenever there is one thoda sa bump in either of Liverpool and Man City. I think City. United are priming themselves up. I think Spurs might. Let's see how they recruit in the summer. Spurs का देखना पड़ेगा. Although my unpopular opinion about Spurs, call it an Arsenal bias. I think they are what every club needs. Is like one of those entertainers. The people who are there to add a little spice, but never really there to completely finish. But I might be completely wrong on Ange. I think he's a great manager, but I don't think Spurs will reach that height. I think the team ki construction at Arsenal is in a way, personally, is in a way.
हुँ, that it is primed to peak together whenever there is a change in cycle. And I think football is cyclical, it will always change, ट्रू, ट्रू, which ट्रू। is why I think Arteta and this team will win. And I think that the day if we win something इस huge सीज़न this season, I don't think so. I think we'll be again short. This is one of those seasons of consolidation. Last season we reached a lot. Now I think we're consolidating. I think we'll be back again. This season, I'll be very shocked if we win one of the league or the Champions League. I think it's a little too far for us. The same thing जो हमारे साथ लीग में लास्ट सीजन हुआ था, it will happen to us in the Champions League where people are not taking us as seriously. And vibes pay and talent pay, we end up reaching too far, but then teams take us seriously and then we get a little found out. I think there are still deficiencies in the squad जो हम fix कर सकते हैं. I'm not happy with the recruitment this summer. ट्रू मैं The भी हूँ money, भाई। काई huh? हावर्ट्स देख के मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। मैंने तो हावर्ट्स की Yeah, साइनिंग देख के I can still. I think it was a bit too early to get him. Like there was a vision. Unfortunately, I think the vision has not come to fruition. And so we are not a club like City, जो 50 million on Calvin Phillips waste कर सकती है, on Matthias Nunes को you can give time to get accommodated to the system. I don't think most people in this chat have even seen players called Sergio वो क्या है? क्या Perrone and Sergio Gomez. I don't think most people have seen, don't even know how they look like, but they are still City players. Um, and so we don't have that luxury, unfortunately. So that 100 million slash 200 million, whatever we spent, has been wasted. Timber injured on the first game, so it's basically you spent 30 million for a rehabilitation program. Partey हुँ, is never fit. I think Declan's the only one who has stepped up yet this season, so kudos to him. भाई डेक्लन But तो भयंकर भाई इस सीज़न, I agree, man. खतरनाक। He is good. He still has deficiencies. उसकी Hopefully, उसका स्पेशली hmm, मुझे go on. टॉटनहम गेम याद है डेक्लन का जो टॉटनहम के Hmm, अगेंस्ट खेले थे। भाई साहब, वो वन मैन गेम था। दैट वाज़ अ लिटरल वन hmm, मैन टीम गेम, मज़ाक भी नहीं। इट वाज़ yeah. लाइक कि नोबडी मुझे ऐसे एक भी प्लेयर नहीं लगा मुझे आर्सेनल से जो शोड अप लाइक उस गेम में। वो लास्ट में Hmm, जैसे-तैसे करके ड्रॉ निकाल लिया था बट भाई वो yeah, भयंकर yeah, जो yeah. डेक्लन I खेला agree. था भाई उस गेम में, खतरनाक। So yeah, I think Arteta will go to Barca, uh, and I think it'll be a big task for us to also fill in who comes in after this. I think I hear names get me Simone Inzaghi. Like there's Renisu in the channel, devout Arsenal fan, serial Arteta hater. Uh, so he's like, get me Inzaghi, get me Simeone. It's going to be tough, man. I think hopefully this guy gets something big this season, next season, whatever. I hope he wins something big so that there is some sort of redemption at this guy. Because as much as भाई इंज़ागी इज़ ग्रेट, लाइक tell इंज़ागी me one अच्छा thing होगा। about football narratives. In on one hand, there's a very legitimate criticism towards Arteta. 600 million, 700 million spent. Fifth year of project, one FA Cup. Why do you think that is? And do you think it's justified criticism? Is it just that key circumstantially you are competing against probably one of the greatest teams ever constructed? Like if you watch NBA, this is like Golden State Warriors with KD, Steph, Clay, Draymond, everyone at their peak. Is this one of the greatest teams ever constructed, and hence it is like I said, you have to be perfect to win something against them? Or do you think, nahi bhai, like if you have big club ambitions, you should have more than one FA Cup to show for it? भाई वेरी हार्ड टू से मतलब मुझे लगता है लीग तो नो चांस लाइक देयर इज़ नो वे इन हेल कि इस सीज़न से पहले आर्सेनल कभी भी जीत सकती थी लीग, मज़ाक भी नहीं। इस सीज़न से पहले इनफैक्ट लास्ट सीज़न भी दे डिड सुपर वेल पर वो इट डज़न्ट एक्सिस्ट लाइक विद सिटी, विद पेप वो शॉट है ही नहीं। इस सीज़न है मेरे हिसाब से तो है, इस सीज़न विद द डे जो थोड़ा सीज़न स्टार्ट हुआ है वगैरह बट अगेन भाई इट टेक्स भाई मतलब मज़ाक भी नहीं इट्स नॉट इवन अबाउट आर्टेटा भाई, इट्स नॉट इवन अबाउट आर्सेनल, इट्स Hmm. नॉट अबाउट लिवरपूल, इट्स अबाउट दैट बॉल्डी, Hmm. इट्स अबाउट दैट guy. भाई he has eaten up Mourinho, he has eaten up Klopp of all people. Hmm. He leaves भाई वो हड्डी भी चबा जाता है भाई कुछ नहीं छोड़ता। तो वो And then he goes on to like, oh, it's such a great team, such a great manager. It's like, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। yeah.
वो सबसे भयानक चीज़ है और वो भाई अगेन लाइक वो कहते हैं बॉटल कर दिया वगैरह। मेरे हिसाब से दैट वाज़ द इवेंचुअल ट्रैजेक्टरी ओनली जो वो जितने भी पॉइंट्स पे आर्सेनल ने फिनिश किया था, हुँ, दैट वाज़ द लाइक देयर वाज़ नो ओवर परफॉर्मेंस, देयर वाज़ नो एल्स, समझ रहे हो? लाइक इन नो हुँ। अदर रियलिटी कुछ है नहीं। इट वाज़ अ बस डिटर्मिनिस्टिक ट्रैजेक्टरी हाँ। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली और बस वो अलग बात है कि सिटी इज़ जस्ट इतनी रूथलेस कि वो एक चिंक इन द आर्मर भी है तो यू कैन नॉट विन अगेंस्ट देम। भाई वो अगेन भाई तभी तो भाई जो क्लॉप की विन अगेंस्ट लाइक क्लॉप की भाई क्लॉप के लिए वो प्रीमियर लीग टाइटल इज बिगर देन द चैंपियंस लीग। दैट्स हाउ डिफिकल्ट इट इज टू विन अ हुँ, लीग टाइटल अगेंस्ट पेप। इट्स इम्पॉसिबल भाई, पीपल डोंट रियलाइज। लोग अब भी रियलाइज नहीं करते। पेप हुँ। इज अ फ्रीक भाई, मॉन्स्टर। He is man, and that's the kind of guy you're competing against, and you have to be better, man. I just my only thing is with Arteta, and the only fear I have for Arsenal and Arteta is that we are waiting for this peak. We are waiting for somebody to slip up so we can pounce. Like in the last few seasons, we've closed the gap, but हम्म। we should not wait so long that others catch up now. Like United is filthy rich. They can have a 200 million transfer window for 300 million transfer window every year easy. They make so much money. It's easy. They're financially healthy. Their stadium is crumbling, their academy is crumbling, but I think that will also be fixed. And now they're getting the pieces in place that will make them recruit better and smarter. They will not spend, they will not overpay. This Barada guy, this Dan Ashworth guy, they will do their utmost best to reconstruct United really well. Chelsea, I think they are going in a trajectory which will probably reveal itself a little further down the line. But they are, it's clear the owners want the club to be constructed a particular way. With Spurs, honestly, wild card. I don't know what to expect from Spurs. भाई पर यार स्टिल इतने पैसे भाई इन सब क्लब्स पे। And इट्स these clubs, क्रेजी। by the way, outperform us massively in terms of revenue. Spurs be they are the most revenue making club in London now. Chelsea will उनका eventually come back. स्टेडियम इतना अच्छा है ना लाइक But stadium, स्पर्स का। yeah, they were ahead of the curve in that. They were ahead of the curve. They made a multi-purpose stadium. Emirates is a single-purpose stadium, and so that will always be an issue. So we will have to. The window of opportunity is very short, and I don't want us to wait so long कि ये सारी window हमसे निकल जाए, and every other club catches up, and then we end up having a new sort of competition. ऑल्दो जो क्रिटिसिज्म है ना वैसे वो आर्टेटा का लाइक अगर तुम देखो यूरोपा लीग वगैरह में वहां पे तो हगा है भाई ऑनेस्टली। भाई 100%, 100%. We should have मैं भूल at जाता हूँ हर least. बार कप कंपटीशन वगैरह। वहां पे तो निकालना था भाई यूरोपा लीग वगैरह लास्ट सीजन। Hmm. Okay. All right. Last questions for you. Expectations for Barca next season? Asks Ishrat. विन 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 भाई सेम भाई मेरे को ये पसंद नहीं जब हम अपने प्लेयर्स से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं। भाई दीज प्लेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू विन एवरी अदर गेम। दे हैव क्वालिटी, दे हैव द नेम, सब कुछ मेंटालिटी वगैरह वो अलग बात है। थिंग्स डोंट ऑलवेज वर्क योर वे बट नेक्स्ट सीजन भी सेम एक्सपेक्टेशंस, गो आउट Hmm. देयर एंड विन। Why do we try Casado as DM? नॉट फर्स्ट टीम क्वालिटी मेरे हिसाब से लाइक लोगों को पसंद है वो बी टीम वगैरह उसका वो है। इवेंचुअली ही माइट हैव appearances here and there but not first team quality। मोटा और डिजर्वी भाई मोटा से मेरे को मोटा इज लाइक शाबी अलोंसो फॉर मी क्योंकि मोटा वाज सुपर इंटेलिजेंट प्लेयर। इतने वैरायटी ऑफ कोचेस के अंडर खेला है, उसका एक्सपीरियंस इतना लाइक इतना वैरायटी वाला रहा है तो आई एम एक्सपेक्टिंग बिग थिंग्स फ्रॉम हिम। पर भाई Hmm. डिजर्वी एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक लाइक एनी यंग कोच इज बेटर देन डिजर्वी, मतलब आउटसाइड ऑफ आर्टेटा वगैरह। Hmm. बट डिजर्वी इज क्रेजी। United will peak next 3 years. Signing will fire. Hoyland is catching flow. Meno is mature for his age. Licha is back. Garnacho development is unreal. I think Swayam, I agree. I think United will get definitely better. Yeah. But I think your biggest issue right now is, um, personally for me, it's defense. I think the key differential between Chelsea and United at this stage is defense. I think Chelsea's defense is much better than Man United. And that is why in nervy games, Chelsea nikal legi. If Chelsea were facing Newport yesterday, they would not have let it be equalized till 2-2. वो तो चलो eventually your attack bailed you out in the end. But bro, honestly, I was ready with the memes if United had to face a replay या फिर हार जाती वो न्यूपोर्ट से हार because what जाते। was that yesterday man? What was that yesterday? Garnachas भाई एक तो यार ये these names we need new slander names गे, भाई. गे नाचो। Sakas, Garnachas. We need new slander names. But thanks, yeah.
फ्रैंकफर्ट का मैनेजर कैसा है? आई डोंट नो हू इज़ फ्रैंकफर्ट मैनेजर टू बी ऑनेस्ट। रूबेन अमोरिम, मैं भी आई डोंट माइंड हिम। स्पोर्टिंग राइट? ही अमोरिम? हाँ, ही इज़ द नेक्स्ट होज़े मोरिनो, पता नहीं भैया, और ऑनेस्टली इतने या सारे नए मैनेजर मिले यार, उनसे, एक कौन तो यार अच्छा देखो, लगे। फ्लेवर ऑफ द मंथ तो बहुत सारे चलते हैं राइट? डिजर्बी वाज लिंक्ड टू द वही। सिटी जॉब दिस सीजन, नोबडी रेट्स हिम। नाउ शापी अलोंसो इज देयर with 64 games to his name and stuff like that. So pata nahi yaar. Anyways, I would say if Barca temporary fix for 1 year, then big manager when the finances get better. Will the finances get better is the big question. Have to be patient. I don't think you have it, lone wolf bhai. I don't think the media has it, and I don't think the online fan base has it. Have to be patient for the next few years. Never happening. We get enough money. I think money is the thing. Patience will come if you can get the money. If you don't get the money and you're still stuck in the same cycle where you have to celebrate registrations, then I think it will not work out. Again, you ये will और have विशियस to. साइकिल है। आई Yeah, थिंक जो ये पेशेंस वाला चीज़ है ना, इट्स द सेम विद आर्सेनल भाई, व्हाई डिड इट टेक सो लॉन्ग फॉर आर्सेनल? bro. It's been 20 years since we won a league title, man. 20. Can you imagine? इतना पेशेंस नहीं होता भाई। एट वन बेट, एक पॉइंट आते हैं जब तुम्हें बेट लेना पड़ता है, 600 मिलियन स्पेंड करने पड़ते हैं इस बंदे पे। Yeah. 600 मिलियन स्पेंड, यू कांट, यू यू हैव टू लाइक, मतलब जो मनी बनाने का तरीका है ना, Hmm. इट्स जस्ट मोर रिस्क। Yeah. यू कांट सिट एंड मेक मनी, तो वो मनी बनाने के लिए भाई गो आउट देयर एंड ट्राई टू विन। Hmm. Possible for Liverpool, Alonso Hansi. I think it's going to be an experienced manager and not Xabi Alonso. I think Liverpool have always hired an experienced manager. Chahe Brendan Rodgers ही क्यों ना हो. He did work at Swansea before and got them promoted and got them a title also. He won a cup with Swansea. So I will say they will always go for somebody a little more experienced, somebody who's won something for Liverpool. Won't be able to sustain the pressure at Barca, unfortunately. I think, consider present circumstances, me, you're definitely right. But I think Arteta's trajectory, call it, I don't know, biasness or whatever, I think he's straight to the top, man. I think he's got, there's it, I don't know why, but a lot of people in the coaching world, everyone rates him for some reason. Negative criticism is always, I think he's very headstrong in that sense. यहाँ पे भी उसको बड़ा मिलता है, but बारसा में तो next यार level आई थिंक मिला। उसने ऑलरेडी वन ऑफ द लाइक टॉक्सिक एरा तो सहे ही है। लाइक उसके भाई, स्टार्टिंग के yeah, दो yeah, तीन yeah. साल बाद तो भाई वो उसने I I think he should be able to manage. कैसे हो माजिन भाई? Member for 10 months. Absolutely huge भाई माजिन भाई. I'm good dear माजिन भाई. जी Just भाई। busy as usual. चलो guys, we'll wrap up now यार. Chonky's frequency of cuff, expected cuffs हाँ, Chonky के rise हो रहे हैं. So we'll भाई give him some rest as नाइट well, नाइट man. नाइट इज यंग। The night is young, bhai. Thanks for subscribing, everyone, man. And if you still haven't liked the video, cool nahi ban rahe ho, but I would really appreciate if you really like the video. Still not 300 likes. 21 away from 300 likes. Kar do. Maze aa jayenge. Check out Chonky. In the title, he's tagged in there as well. The guy is regular post Barca and very interesting content. Also collabs with Yash. YJR makes Langoor's podcast. Check that out as well if you're into aliens, Epstein, and a lot of stuff. ओ गॉड, मैंने एप्स्टीन बोल दिया, मेरी वीडियो डिमोनेटाइज हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं यार, होता है होता है। चलो बॉयज, सी यू ऑल सून। थैंक यू सो मच फॉर joining an hour and a half purely for Barca. We'll see you guys soon. Tata, bye bye. Thank you Chonky for joining us. नो प्रॉब्लम। चलो।